हेलो वेलकम एवरीवन टू अनदर स्ट्रीम। मोहम्मद शहजाद सर, आपने एसएमआईटी से पढ़ा है? नहीं, मैंने एसएमआईटी से नहीं पढ़ा, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो आई स्टडीड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आपने कहाँ से पढ़ा है? हैव यू स्टडी फ्रॉम एसएमआईटी या कहाँ से? अभी आज मैं ऑफिस गया हुआ था, तो आई ट्रैवल्ड टू माय ऑफिस दैट इज़ अबाउट 1 or actually 2 hours away from my place. So I did not plant my coriander that you see right here. See the coriander right there? So now I'm watering it. Hopefully, hopefully ज़िंदा बच जाएगा ये. Oh, we'll see. Yeah. मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं लर्निंग लास्ट 2 मंथ रह गए, बैक एंड चल रही है. ओके, ज़बरदस्त. व्हाट आर यू लर्निंग इन बैक एंड? नोट जेएस या क्या सीख रहे हो आप लोग? I'm also going to I'm also going to open the chat as well so you can see your messages. Sorry about that. If you're in Facebook, YouTube, Twitch, wherever you are, if you type your messages, you're going to be able to see it here. Node.js, MongoDB, and Express. That's good. Awesome. Zabardast. MashaAllah. Have they started looking into Next.js at all? क्योंकि MongoDB, Express, ये तो मतलब सालों से चलता आ रहा है. Is there any focus on Next.js at all? I'm not saying कि MongoDB या Node.js या Express छोड़ देना चाहिए, but I'm just curious if there is any focus on on that at all. In the meantime, we'll start looking into the slides क्योंकि मुझे want to work on some slides and an app as well, hopefully. Yes, hackathon हो जाए फिर Next.js. Okay, sounds good, interesting, super nice. I wish you all the best learning at SMIT. I think it's a nice place. I mean, institutes I don't think matter as much as your will to learn. So if the institute allows you to learn in a really good manner, absolutely, it's awesome. So we'll look into, hey, what happened? Context API, prop drilling, or React, prop drilling, and context API. Let's make it like this. And we're also going to name the same thing in the for the slides as well. I'm gonna open this as well here. Let's open it like this. Let's open it like this. And let's create another slide for this. I really enjoyed the last lecture जो मैंने record किया था. It was about use effect. तो use effect के अंदर बड़े मजे की सीन है. There are so many interesting things about use effect that go wrong for React developers, and it was really fun recording all of it. So let's go with React context API .md. So let's create this. React prop tooling and context API. सर कॉन्टेक्स्ट के बाद RTK प्लीज़ समझाइएगा. शहजाद, आप कोर्स के अंदर इनरोल्ड हो? जो रिएक्ट का कोर्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप हो ऑलरेडी उसमें?
तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट मैनेजमेंट रिकैप. Maintain state in a React component, function component. We use the useState hook. इसको ज़रा यहाँ पे चला भी लेते हैं. लोकल होस्ट 8000. And let's also create a element class fragment ताकि हमारे पास स्लाइड के तौर पे आ जाए. Let's also put this into a small. जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, I am trying to create my slides at the moment. Ooh, this looks weird. Maybe also we can add style flags or display flags. Flags, line items, and center. Nope, bad idea. इसको रिमूव कर दें. इसको भी रिमूव करते हैं. Let's keep this as it is, I would say. Let's put this in the underscores. So we have this as, yeah, italic. Now I think we can look into further slides. Let's see. Okay. What is prop drilling? Now for prop drilling, we need an example that actually uses prop drilling. So let's come up with something. Let's come up with a nodes API or nodes components. So we can say something like we can do something like this. We can have an app. I think in Exaditor you also have frames, right? Frame tool. Yeah, so we can have something like this. And then inside that we can have a bunch of components. Let's call them nodes component. So here we have one. So let's say node 1. And here we can also have things like some icons, maybe text to diagram, AI settings. Where's my library? So here we could have something like an icon. So, or can we have a delete icon? Do we have a delete icon? Maybe I don't know if I have a pin icon. No. No, I don't have it. So let's say we had two buttons here. You could pin it, or you could delete it.
two options. And then we just copy paste this. Let's group this. So copy, paste, paste, and then we can just copy paste this again here. To just for the sake of wireframing, 4, 5. You can see how much time it takes to actually set these things up. So we have nodes 1 to 3, and I can move this frame around as I want. But this is something like nodes app. So if this is the kind of application that we are looking at, then the hierarchy of the components looks something like this. We should have the app component. We should then have nodes component, and then we have inside there we should have node sticky note. Let's call it sticky note. Okay, so we have nodes and then we have a sticky note. If this is the hierarchy of the component, then we can make these, or this one actually dotted. So we'll call this one a smart component. So let's say, so we are discussing prop drilling, we go down, we're talking about this is the hierarchy of the components. So we start with here, the stroke style is different. Then we start with this one. So this is the hierarchy, and there can be many sticky nodes. So sticky node, sticky node, sticky node, or we could just say here dot dot dot. So you get the idea, and then I can move this guy here. So this is the hierarchy of the components, right? Zishan, Assalamu alaikum Ahsan bhai. What about your health? Alhamdulillah, I'm good. How are you, Zishan? Have you looked into the course yet? Start kar diya aapne? Then what we can do is, no problem, happy to help. तो इसको हम normal रखते हैं. We'll use this normal stroke, but here we can use a different stroke. So here we can say we have app component, and then we have the nodes component. Any good Nest.js courses for beginners? Puppy 1, yes. There is a full stack course in which I cover a lot of things from Nest.js, I think including the auth guards as well, as far as I remember. So this is the full stack TypeScript course. I'm going to share the link in the chat. So look into this one. We build a threads application using Nest.js, a full stack, complete full stack application. I think it's probably deployed still, or maybe it's dead. I mean, the app deployment might have been dead because I have to usually pay for these. But I think the code is still works and the tutorial is still valid. Do try it out. No, not in the moment. I would suggest to look into the Nest.js original documentation. I think that's probably the right way to go. But I don't know of someone else's course, to be honest, at the moment. But if I stumble upon something, I can share on my social media. For sure. Course Nest 0 to Hero. Let's see if I can open it. Well, you have 9,300 ratings and about 100,000 students. I would say definitely, yeah, go for this one. But let me first see the contents.
authentication, authorization, security best practices, password hashing, storing certain information, deploying to AWS. Interesting. Utilizing the SGS command line interface, CLI. Mm-hmm. Environment spin configuration, guards. Good. This one is a bit vague because yeah, this can mean anything essentially. Using DTOs, you do that default by Nest.js. Unit testing, this is interesting. Yeah, I think this is a good one. Database persistence with MongoDB. Okay. Okay. Interesting, because we are using Postgres, but then we are also talking about MongoDB. Maybe because of diversity, the author might want to have more diverse databases. Designing development REST APIs, performing CRUD operations, using TypeORM. Nice. I usually go for Prisma, but TypeORM is also pretty nice as well. Persisting data using a database. Persisting was something here as well. So I'm not really sure what this one does. Writing clean maintainable code in line with industry standard, using Postman for testing backend services. Nice. Implementing efficient logging. Nice. This is a good one. Data validation using pipes. Interesting. This is also good. I'm interested to see if they're using class validator or something else for data validation. But if you're using DTOs, you can directly use the class validators. At least I think that's what I do in my course. Modeling entities for persistence layer. Nice. This is very specific to what kind of persistence you are using, but okay. Using GraphQL with Nest.js. Okay. Okay. I think so. It's a lot, to be honest. There's a lot of things here. I mean, you're talking about MongoDB, you're talking about GraphQL, you're talking about Postgres, you're talking about TypeORM. It's a lot to learn. Mm, yeah, I think the idea would be to have your expectations, accurate. To you need to know what you are going to learn and how much time it would take for you. So 8 hours, 45 minutes total length to understand all of this. I think you might take like 4 or 5 weeks to actually do this. If you work on this, completely focused, then we're talking about 4 to 5 weeks. um yeah, and but then again, there's so much information in this. It's really interesting to see, what kind of, do you actually build something out of this? Do you have an app that you can show off to the user, or at least you have enough information to create an app yourself? If that's the case, then yeah, I think that it's a good one. 34 courses, wow, interesting. Is this a Nest.js? Oh no, sorry, that was not the person. There was a testimonial featured review. Interesting. Interesting. 3 courses. Interesting. Can we look at the preview? Welcome to the course. To just Hello. I'm glad you decided to join me for What was that? the journey of learning Nest.js. Hmm? Since I first released this course almost 2 years ago, Nest.js has become the fastest growing technology in the entire Node.js ecosystem. The updated version of the course, the version you're watching right now, has over 8 hours of content, and we are covering so many great topics. One thing you can do to maximize your learning potential from the course is to follow me and write some code, and I promise you there is no better way to learn. If you encounter an issue, I encourage you to check out the Nest.js documentation. It's there for a reason, and the team has done a wonderful job at making Nest.js accessible to everyone. The documentation is really, really good. I always do my best to include references to the documentation in my lecture resources whenever possible. And if you are still struggling, feel free to write your question in the Q&A section of the lecture. If you do so, make sure you provide some useful information. What is useful information? Error logs would be useful, and code snippets would also be useful. Without these, it would be impossible to help you. Again, thanks for enrolling, and let's start this journey. All right, welcome to the first section of the course where we're actually going to code something. In this lecture, I'm going to guide you through the application that we're going to be developing for the most part of our course. We do have a second application that we develop using GraphQL at the end, but this is the first one, and this one is going to help us become familiar with Nest.js. So this is going to be our task management application. Okay, now I'm gonna stop this now. Okay, so I have this thing to show you. I had to go today to the office, and this guy actually shrunk down a bit because of lack of water. So I just watered it now, and I'm hoping this revives, because otherwise I would be sad. So I need to water some plants now.
Ifza says, I'm so happy you started React course. I did not start it because of the hectic routine, but I will start soon. Hopefully end of next week. Yeah, hopefully, yeah. No rush because I'm also developing it bit by bit. So this course and it needs time to practice. So I think it's also good that the videos are coming bit by bit so you get time to practice, to absorb this information, and you don't try to do everything in one day. So you have, some steps to go through, or you can do it in multiple days instead of just going for one day. So yeah, no rush, and all the best for the next one. Zishan says, yeah, I was started from day first. Awesome, sounds good. What about the sections tutorial check project overview? Is there a project overview? I did not see it, but it looks nice. Go for it. आदिल भाई आपकी कंट्री में डेटा साइंस की मार्केट कैसी है? It's good. I mean, overall, it depends. A lot of startups are investing in data science. Some enterprises also do it, the ones I know of. But it's good. It's just like in any other country. Do you have a specific question though? Okay, we'll say this one is a smart component. Let's go with a medium one. We're gonna say this one is a smart component. These ones we are going to call them dumb components. So dumb components, we're going to mark them just like these. And let's move it like this. And I'm going to also copy this and move this behind. But for this one, then I can also select the background as this. Does it do it? No. Does it do it at all? Sticky note. No, it doesn't do it. That's weird. I want to select a background. Most used common class. Oh, okay. So okay. But I need to select the solid. No, it does not do anything with that. It doesn't hide, or it doesn't. What am I missing? So this has to have a background, right? The background is solid and it has to be dark shades. We got this shade. We got the complete opacity as well. Why doesn't it fill it? That's weird. I have no clue. Okay, I have no clue why. I was assuming that this one behind would actually. Okay, now I understand. It was not behind it. Now it's behind it. My bad. Okay, so sticky note, just to show that there are multiple sticky note components there. And we can also do one more. Okay, there we go. Uzma Hamid, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Uzma, how are you doing? आदिल भाई आप मुझे कुछ देर से दे सकते हो मेरी सीवी कैसे बनाना चाहिए? मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, फ्रंट एंड मंड स्टैक में जॉब चाहिए। आपकी सीवी सिंगल पेज होनी चाहिए, वन सिंगल पेज, मल्टीपल पेज नहीं होना चाहिए। यू शुड मेंशन योर एक्सपर्टीज़, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और वो वाकई द वंस दैट यू आर रियली गुड इन। सो डोंट राइट फॉर एग्जाम्पल पाइथन इफ़ यू डोंट नो पाइथन, डोंट राइट C++ if you're not really good at C++. So just write the ones that you're really good at, that you feel comfortable with, or feel comfortable answering questions if you were in an interview. तो अगर आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ का, तो देन यू शुड मेंशन दोज इन योर CV. So put it one single page. So education, expertise, your projects, and आपके projects के अंदर I'm not sure if we have resume public. Okay, let me see if I can find. I'm gonna blur this. I'm going to see मुझे अगर इसका public version मिल जाता है because it contains my phone number and whatnot. If I go to docs.google.com, I should be able to find a public resume that I can show you. Public copy of resume, yeah, that's the one.
Yeah, exactly. So if you see this is my resume. So I put experience. I put के मैंने इस कंपनी में काम किया, ये मेरा टाइटल था, from this to this. I've also put के what my responsibilities were. ठीक है, यहाँ पे वो सारी मैंने चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाली हुई हैं. सेम गोज़ विद दी अदर कंपनी, सेम गोज़ विद दी अदर कंपनी, सब में सेम चीज़ की हुई है. टेक्नोलॉजी स्टैक क्या यूज़ किया हुआ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, व्हाट डिड आई रियली डू इन द जॉब, डिड आई work with multiple people, did I mentor, or was I a senior to some of the people, was I training different people. So I usually write those things. उसके अलावा you should have your projects mentioned just like this. ठीक है, तो you can go ahead and say for example ये मेरा GitHub है, then your GitHub should be really good like this. If it's not as good, I mean don't compare मेरे GitHub से obviously क्योंकि मुझे 10 साल लगे उसको अपडेट करने में, बट इट शुड बी डिसेंट इनफ कि क्लीन हो, इंपॉर्टेंट रिपोजिटरीज हाईलाइट हुई हुई हो, आपकी जो नॉर्मल टू डू एप्लीकेशंस हैं या ट्यूटोरियल फॉलो करके जो रिपोजिटरीज हैं यू कैन रिमूव दैम, और यू पुट द पिंड रिपोजिटरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई पिंड रिपोजिटरीज जो मेरी बेस्ट रिपोजिटरीज हैं, तो वो मैंने पुट की हुई हैं. सिमिलरली जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, मेक श्योर टू पुट अ लिंक टू दोज प्रोजेक्ट जो क्लिकेबल हो, जो काम कर रहा हो, एंड पीपल कैन एक्चुअली सी. फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा प्रोजेक्ट है फ्लैशबैक, तो यू कैन सी कि फ्लैशबैक ऐप.com काम कर रही है, यूआई काम कर रहा है, यहाँ पे गिटअप का लिंक भी है. सिमिलरली अगर ये वाली मैं ऐप खोलूँ, ओह ये काम नहीं कर रहा तो उसका लिंक मुझे अपडेट करना है. ठीक है, देखा, तो ये ज़रूरी है. ahsanayaz.github.io क्योंकि मैंने इसको मूव कर दिया था, तो इट इज़ नाउ हियर, तो आई शुड बी अपडेटिंग दिस लिंक, और इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है, तो योर लिंक्स शुड ऑलवेज बी वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल पल्स चेकर हम चलाएं तो दिस शुड बी ऑल्सो वर्किंग. ओके इट्स वर्किंग. एक सेकंड के लिए मैं परेशान हो गया. तो आपको इस तरीके से अपने प्रोफाइल्स एटलीस्ट रेडी रखना ज़रूरी है विद योर प्रोजेक्ट्स, जो काम कर रहे हो, जो डिप्लॉयड हों कम अज़ कम, और जिसकी कुछ ना कुछ रीडमी जो है ना वो ढंग की हो, ताकि अगर कोई रिक्रूटर इसको देखे, इफ़ एनी रिक्रूटर इज़ वॉचिंग योर गिटहब, they are not looking at rubbish, or they have enough information to actually see what the project is about. For example, if you went to this page and the readme was just empty that said Angular deploy gh pages actions, the recruiter would be like, what the heck, what is this at all, or what does this project do, why did this person create this project. So those kind of questions should be answered directly by your readme, and it should be well documented for both sort of recruiters, for the non-techie persons if possible, and especially for the techie people. For example, this package that I created, this is supposed to be used by developers, so obviously this is supposed to be well documented. So those are some of the tips that I can give you. Okay, Adil, so I think this should help. Afan Imran, are the free slots still available for React course which you shared? Yes, there are still free slots available. You can follow the instructions जो मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पे, उसको प्रॉपरली सही से पढ़ के उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके देन यू हैव टू सेंड एन ईमेल. तो सब कुछ करके फिर ईमेल सेंड कीजिएगा. मुझे बहुत सारी ऐसी ईमेल सेंड हुई हैं जिसमें लोगों ने सहमति नहीं की कि वो सही से पढ़ लें कि क्या रिक्वेस्ट है या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. तो प्लीज़ रीड इट करेक्टली और उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो. ठीक है, सही हो गया. दो प्लांट्स ऐसे थे जो कि फौत होने वाले थे. अल्लाह का शुक्र है कि वो पानी देने के बाद उनमें से एक तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक. जो दूसरा प्लांट है वो धनिया का है, तो इट्स सुबह देखते हैं कि इसकी क्या हालत हो रही होगी, बट विल सी. ठीक है अफान, तो यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और वहाँ से आप फिर उसके बाद कर सकते हो इन्फॉर्मेशन शेयर. अच्छा, हम वापस जाते हैं एक्सेलिटर पे. तो हमने नोट्स बात की थी, और ये स्मार्ट कंपोनेंट है. इसको हम हाईलाइट कर देंगे ग्रीन से, और इनको हम हाईलाइट कर देंगे ऑरेंज से. ठीक है, डम कंपोनेंट्स. अब हम ये करते हैं कि स्मार्ट कंपोनेंट की ज़रा वैल्यूज़ पास करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्मार्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास स्टेट मैनेज हो रही होगी. यहाँ पे हमारे पास होगा नोट्स सेट नोट्स यू स्टेट.
ठीक है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होंगी. लेट्स मेक दिस स्क्रीन. ठीक है, और हमें एक और काम ये करना पड़ेगा कि लेट्स ग्रुप दिस और notes will be passed as a prop. But हम इसको देखते हैं. Ahsan bhai, what makes you React course different from others, and I want to learn React.js? Will it be perfect for me? What makes it different from the others? पहली चीज़ तो ये कि ये कोर्स मेरा है, औरों का नहीं है. तो that is I think enough said. और दूसरी चीज़ ये कि मेरा एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना एक प्रैक्टिकल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 6 ईयर्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करने का. तो आई हैव ए सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोच. और मैंने सिर्फ रिएक्ट पे काम नहीं किया हुआ. आई वर्कड ऑन डिफरेंट frameworks. I've worked with Angular, I've worked with Knockout.js, I've worked with Backbone.js, I've worked with Solid.js. So I have a lot of insights on what makes a good framework good. So having said that, working with React for the past 6 years, I have enough experience and practical way of teaching that I don't think a lot of people have. So I don't need my course to be different from others, or I don't need to have a unique selling point for my course. Just because it's my course, just because I'm doing it and I'm creating it in the way I teach, I think that's enough unique selling point, to be honest. So I hope that makes sense. So if you want to buy it, you buy it. If you don't want to buy it, you don't. But I don't really have to, upsell it, so to say. So we have notes here, or we'll also add one more thing that we'll add here as a prop. We'll call this pin note, and we'll also call a delete note, and note ID and note ID. So we'll create two functions here. We'll also left align those so we can also do this. ठीक है. Let's do it like this. ठीक है, ताकि we have a clarity on what we are talking about. तो इसको we'll do it like this. What else? And this needs to be then passed into as props to all nodes and then the others as well. So I'll group these. So what I'll try to do is I'll pass these props from here to here, and then from here to here. So let's make this 1. Let's make this 2. Wait, what happened to this guy? It has a background. We don't want a background. Ooh, let's move it this here. Make this 2. Wait. As props, passing as props, and let's say here, let's put it here. Okay, I think this is good enough. Concept, I think concept बताने के लिए this is good enough, and then we can look into how do we do that with the with context API then. Good. So what we'll do is we'll also remove this delete note. For now. Or yeah, let's remove this delete note for now. Passing as props. What are we passing as props here? I think that's also a really good question. So passing as props, we are passing as props nodes and pin node. I think that is supposed to be mentioned here. Okay, there we go.
And then we can also look into then what happens if we try to add one more thing. Let's say if we want to add one more thing in here, that is delete node, and we do node ID. And if we try to make this guy I don't know, blue. No, let's add it like this, delete node. Okay, so we got it like this. One thing that I wanted to ask you, would, when I'm recording these lectures, do you want me to record these while I'm live streaming? Because then you can also see the mistakes that I do. It's not going to be as interesting because I'm obviously I will not be doing all of my lectures recorded, but I think it's still going to be interesting for you to see things like these, like how I come up with these, or how I code the application, how I set it up. If you're interested in that, let me know. Maybe we'll try to do something like this. So if I have to add it like this, delete node, right? So if I'm trying to make it delete node, then I would have to go and actually I would have to add this delete node everywhere, and comma delete node, oi node. We're gonna have to add it here, and we're gonna have to add it here, if that makes sense. We move it here. Okay, so I think this now should make sense to what and this is essentially, yeah, this is called prop drilling essentially. How many of you in the chat already know what prop drilling is? Do you already know the concept of what is prop drilling? I think we should do it something like, I don't know, maybe do it like this. So here to here, and then here to here. Now this thing that we are doing, it's called this thing right here. This will call prop drilling. Yes, but getting to know more better. Heather Bukhari. Okay, good, good, good. Good, 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 good. Okay, so we have a bunch of things discussed already. So we got the notes thingy, then we got this, that, la, 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 la. I think we are good. But let's now talk also about context API. So context API. What does the context API do? So what this should do is, instead of the props that we need to pass that we have right here, we could do something like we let's move it around. I'm trying to I'm trying to see how can I how can I explain this better. So maybe let's remove this guy. So what we'll do is we'll still keep this as a smart component. What we'll do is we are going to make this guy solid, but we are going to say we have the app wrapped in a context. So we can say this whole thing, this whole thing is the context. And
provider. Yeah, it's hard. I mean, not hard. It becomes hard to explain it in a way that it is the easiest way possible. So here we can say instead of context, we are talking about provider. So this is not really context, but it's rather context provider that we are talking about. So it's a context dot provider that we have, and then we can have consumers within the app. For example, we could have app as a consumer. So this can become a, and I should probably make this large. Ooh, context dot provider. Okay. And then this guy is supposed to be context consumer. And then wait, this can be context consumer, context consumer. Okay. So we say this guy is going to be context consumer. This is going to be context consumer, right? So now what should happen is if we create another sort of diagram to it and we take the context sort of out of it like this, maybe if this is the context, do I also need the methods to be, I'm thinking, I think I can pass the functions in the context and then use those functions directly, which means they should be able, yeah, okay, yeah, I think I understand. So here, oopsie doopsie. So let's say this guy is the context provider. Now this guy should contain all these things right here. So nodes. So what should happen here is the context consumer. This is the context provider. Okay, and I would say that this, oh, let's call this context. Let's call this the context. Contexter? Nah, context. So this is the context, right? This is the context provider. Let's copy this. So this context provider can use the context, of course. We maybe use this, to be honest, and wrap it like this. Okay, so this now means that the context consumer, this guy, will actually send in the information. So this will send, this will essentially pass set nodes, pin node, and delete node. This will basically pass these things here. And let's make this a solid line. Oops, let's make this a solid line. Let's make it green also. So context consumer is actually going to set these things. Now it's a consumer still, so I'm gonna keep this like this. And then this guy can actually fetch these from the context in this case. So this will actually get this nodes, pin nodes, and actually, what I'm going to do actually is this. So nodes, I'm going to be getting those nodes, and this guy is going to get pin node and delete node, and it's going to be orange. No, it's going to be this pin node and delete node. No, it's going to be green as well. Or we can actually make these white just for understanding. So this is gonna receive pin node and delete node,
And this is gonna also go here, and this is actually receiving green. No, not green, this guy and this guy. Okay, Bully, hello, can I ask you some questions? Yes, you can. Okay, so I think this sets these things. Or here I can say setting. No, I can say in medium setting. Here I can say receiving. And here I can also say receiving. This context consumer should be white. Why is it orange? Yeah, I think that is actually more than enough information, to be honest. And if we do this, then we don't have any prop drilling in this case. And we should have something done as well. Now, how about we start with a new React app and implement this? What is prop drilling? Prop drilling is a way of passing, or the concept of passing props to multiple nested levels of a component tree is referred to as prop drilling. This has some disadvantages. Advantages that we'll discuss. Okay, so we'll start with these. I'm not sure if I should create an application or if I just should go here. I think I'll just go here and then explain this whole concept. I think we are good, to be honest. I'm working on my first app and started learning React Next.js through tutorials. I'm stuck on creating the login register page. I use Axios to create a request to the backend and it worked. Okay, I'm waiting for the question. What's the question? Where are you stuck? And here we can also put these inside this. Oi oi. Prop drilling. The thing I'm stuck on is I'm not sure what I have to do next. Extract the GW and use it for the user session profile. Yeah, when you make your so the process looks like your front end needs to first authenticate. That's fine. Your front, so this is how it should work. Your user comes to your application, can't do anything at all, and has to log in first. So when you log in, you get the JWT, you store the JWT either in the cookie or you store it in the local storage. It's either up to you. Local storage is not recommended by a lot of people, so they rather prefer putting into the cookies. It's up to you. So let's say you put into the cookies or your local storage. Now whenever you make the second request, for example, let's say I don't know what your application is about, but let's say if your application was about getting notes, can I store it in state? No. Whenever you store it in the React state, you refresh the page, the token is gone. So whenever you refresh your application, the GWT token is going to be gone. So we don't want to have that. Also, when you unless you have a global state, and unless you want to do this on every, because your user is not going to log in on every refresh of the page, right? So you don't want to store it in the state, so you want to persist it into the browser. So either local storage, IndexedDB, JWT, or sorry, cookies, either of those. So when you have a persistent storage and when you refresh, your application would first see, oh, do we already have a token?
If we have a token, then yeah, it's okay. You go to the home page. If we don't have a token stored in the persistent storage like local storage or cookies, then we say the user is not logged in, go to the login page. And then the user has to log in again to go to the home page. So assuming that you already have the token in the storage, then your user is assumed as logged in. You go to the home page and then you make your API call to get the data. So for example, the app I'm working on right now is a notes based application. So if in that case, if I have to make the API call and I already have the token, then I'm going to send the token in the headers. I'm assuming your backend basically looks at that token and authenticates the user using the GW token, and then allows or disallow the user to perform certain actions. So the flow goes like this. If the user is not logged in, user opens the application, React checks the token, says no, you don't have the token, redirect to login page. The other case is user is already logged in, so React checks the token is there, React allows the app or the user to go to the home page. Then as soon as the home page is mounted, you use a use effect to make an API call, and you pass every subsequent call. If you already have the token in your storage, then every Axios call will have to send the token in the header to the backend, so the backend can authenticate it and then essentially can provide you the data that you're requesting. So I hope that makes sense. Okay, awesome. So I think we'll start with prop drilling. We'll then discuss the disadvantages, or we can also just talk about here disadvantages. Hard to maintain. Every new prop has to be passed all along in the component tree. Less scalable and reusable, because if we need to change anything at all, we need to change essentially everything. So solution, and the solution is context API. So we can start with context API, and then we can look into the React context API context. We can look at a very small definition of this. So we have theme context. So we use the context to create the context, just like this. So here, context API. Hey, let's put this at 3, and then we can say first create the context JSX, and there we go. So here we have to import React, and then we can say app context, for example. Doesn't really matter. Here we can also say app context, so we get the app context. Then we can use the app context.provider, and we can provide the value out of it. Then we can also use the context directly, but I want to use the hook. What if you want to avoid passing many levels component composition though? I don't know. I don't want to go for component composition. Want to look for this context. Okay. So then we provide the context in this case, create the context, then provide the context in your application, preferably this depends on which components you want to wrap your context around, and this is a really important concept to learn. Thanks for the explanation. I need to store the token with one of the methods like cookies and get data. I need to get through API calls in which I put the token and the backend provides me the data. Exactly. Yeah, that's what you should be doing. But I think you now know how like what the concept is. Now how to do it, you'll have to obviously
Google it yourself. You can also look into one of my videos in which I do cookie based authentication, so you can look into that as well. I think something like cookie based something something, yeah, Node.js and Redis cookie based authentication. So look into this video, and I hope this will help you. It's not too old as well. It's like 1 year old, but the cookie sessions and the concept is almost the same. So I hope this should help you to some extent. Let's scalable and let's reusable solution, context API. First create the context, blah blah blah. Then provide the context in your application. This depends on what components you want to wrap your context around. This is important. And we can also make it italic. We to wrap your context around. Nice. So what we do here is we should be looking into the React documentation, and here we should be looking into create context. So here we have default value and create. Oh, is this the latest one? Some context equals, that's the same, right? So create context, and then we have the default value. Aha, okay. Default value. That's my bad. So we have default value that we provide here. Then we need to, okay, my bad. I've forgotten my. Just curious, why are you wearing these glasses? Good question. I had an eye infection recently. I'm not sure if you can see it now, but here, I think you probably see if I do it like this. So I had the eye infection here. I think I'm allergic to pollen, which is something that comes out of plants or flowers, and it jumps around and then goes around to other flowers and whatnot. I'm not really sure, but I'm allergic to that, and this usually happens in April. So I had an infection here in my first eye, then I had the infection in my second eye, and this has been for I think 5 days now. So that's why I'm wearing these. So my eyes are a bit sensitive. It's yeah, the perks of if you code too much when you're young, then this happens, and then you're like, so yeah, it's all coming back to me, so to say. So I'm gonna copy this code actually, and let's go and say this. So here I have my JSX. Let's go here. We can say app or we can say something like, not really the light, but we could say what did I do with the create context? Let's say not the theme, but what can we use as a context here? I don't know, maybe to-dos context, or I don't know, things like that. So I think we could do something like a real world example. So this could be like light or dark or something like that. Yeah, let's use the theme context. Why reinvent the wheel? So let's say theme context, and here we have a default value that is light. Okay, and then we go to app, we say theme, set theme context dot provider, and we should also obviously be importing the theme. So we're providing our app or our page or our components around this, and the value here is this. The value comes directly from the provider as far as I remember. Yeah, and the theme is provided as light. When you have that, then you can consume this. Finally, you can consume the value from the context in your component as follows: JSX, and here we can put the next example, which is this. So this is one of the examples that I could put,
I mean, this is from the documentation, but I think when we'll actually work, um, we will look into it in a better manner. So, and what we'll do here is we'll also add element data ID theme consumer, and here we can also say slide data auto animate, right? And here I can actually copy paste this. So let's quickly copy yank p, and we can copy this guy, and then we can remove this guy and paste this. Okay, let's see if the animation works. So here, then we have the consumer. This is a legacy way. This is not recommended at all. So we should be using the recommended way, which is to use use context hook and the theme, and then we can get the value out of that as a theme. Okay, cool. I think that's pretty much it. And then we'll look into our own application. So I want to do this fast. Mohammed Amber says, get well soon. Been watching your basic development course. It's really good. Thanks. Awesome. Thank you, Mohammed Amber. Do share this with others. So I would recommend just sharing this as much as possible. So a lot of people can then, do it for free. And by the way, if you don't really know, this code that I'm writing, this is for my React Urdu course, and this is available for free as well if you follow the instructions properly. So I think I've shared this quite a few times now, if I remember correctly. 33 participants. Yeah, that's the Notion page. So I'm going to share this in the chat as well. If you want to apply for it, go and apply for this. We have some free slots for the React course in Urdu, and there are only 33 slots. I think a lot of them have been filled, but we still have some free. So read all of this properly, follow the instructions. I've shared the link in the chat so you can see it right there, up there. So follow the complete instructions, read it carefully. Do not submit an email without reading it properly. Otherwise I will just ignore it. So this allows you to basically have the whole course that I have, Practical React Essentials, which is about 6.25, but essentially it's $5 in general. So this whole course you can get for free. Right now we are till the styling options. I've already recorded these two lectures. I'm currently working on this one. And we are also going to talk about React Toolkit or Redux Toolkit later on, but I have not published it yet. But don't worry. So I hope that answers and helps actually. Okay, now that we have this, I think that's we can actually look at the code or work on an app. So what I'll do now is, now I'm gonna do sort of a, okay, how about we do a sort of speed coding. Should I start, as I have not completed CSS yet? Mohammed Ahmed. I would say focus on the web development, but you can still follow the instructions to at least buy it. If you're interested in getting it for free, then you might as well just do it right now. So once you're done with web development, then you can start working on React, but at least try to get it for free as soon as possible, if that makes sense. Otherwise you'll have to buy it later on with actual money, of course. Okay, so pre-app, where is the pre-app? Documents, Practical React Essentials, and app. Is that the one? I think that's the one. Yeah. So what I'll do is I'll probably start a new application. I think I should start a new application maybe. Or just create a new branch, to be honest. So here, git status, git add, git commit, final state of use effect. I'm going to commit this. I'm going to also make sure that I have the, yeah, I don't have the final one, right? So I have to also make sure that I have the final one. So here, let's go ahead and add to archive. And this is what I have to do essentially for every lecture that I'm recording. Append, pre-app, node modules, there, final,
use effect, and my camera just died. I'm gonna replace the properties. And also, Ahmed, share this with others as well. If you have friends who want to have the course for free, definitely share with them, especially because you know already like the quality of the courses. So this one obviously is also really good when it comes to the content, but then of course it's also really nice in terms of, I've learned a lot more since I created the web course, or in terms of creating content, of course. Okay, so what we'll do is we'll go to git checkout main, we'll do git pull, do git checkout dash b. We're going to call this use context. Okay, and now we can actually clean up stuff. So we don't really want a lot of things. We do want the to do item. I think I can absolutely remove all of the other things. Welcome message, don't need them. To do's, I think I'll rename this to notes. And here sticky note.tsx, since we are using those terms, right? Then what I'll also do is post page. I don't really want this at all. Main tsx, I'm using theme provider, dark theme, blah blah blah. I don't know how I feel about this, to be honest. I think it's fine. I can use the theme provider here, but I'm not going to touch this file at all, since we are using material UI, right? So I'm thinking. Yeah, okay, let's focus on, because I want to focus on the React part much more than the CSS part. But we can look into this. So this is called notes. We're going to call this notes component, and inside notes we should have to do item, but I'll call this sticky note, right? And then I'll also have an interface or a file called types.ts, and here we can say export type note, and here we can define the type. So what is the type of note here? We have just a text that is going to be string. We will have an ID of type number, and we will have a pinned, which is going to be boolean. That's pretty much it. Okay, awesome. Thank you, Amar. So what we can do here is we can say that this is going to be of type note. So we can import it from the types, and not note but an array of notes, and then each node has to have a pinned set to false. And now I have to do this for everyone. So what I can do is just select this guy, and actually just do this, p, and save this, format document. So we've got a bunch of to do here. I'm gonna actually replace this to do as in note, and I'm gonna do it like this, and then I'll also look into here, so notes, and we'll also do to do. We'll change this to note, and I'm just replacing a bunch of stuff. So notes, set notes, note, and here we have note, person, don't need it, delete, don't need it, add new note, nope, button, don't need it, click me to add new note, don't need it, on delete, nope, item, no item, sticky note. If we go there, we need to have two things. There was one called pin note, and then there was one called delete note. So I need to have on delete, not this, but actually we'll also do the pin note as well, just to see this in action. So here we'll say pin, or now I'm thinking about it, because I have material or MUI installed, I can actually use the MUI component. So MUI
Let's go to MUI, material UI, get started. We got components. We should have something like a card or something. Yeah, so we have a card. This is how the card looks like. Maybe we can look it like this. So card in terms of outline, expand code. So what do we do here? We just say card content. Then we have typography. Interesting. Yeah, I think I'll just copy this for now. So we have I'm gonna do it here. So we have card content, and what I'll do here is we should have here we should have the item. Sorry, this looks a lot red at the moment, but I assure you this is gonna get better. First of all, let's import all of these things. So all missing imports, just import them. Now I have still card content, but okay. So you're actually wrapping this into a fragment. So let's add this in a fragment and format this. Okay. Now that I have this, I can, what did the word of the day? Aha. Okay. Benevolent. Interesting. So here I think instead of this, I should say note. And here I could actually say item dot text. Then I have adjective, blah, blah, blah. I don't really need all of them. And then here we should have a button that says pin. And I think that should be it actually. Then I don't really need to have the button here. I don't need set notes here. I think it's pretty nice. If I go to my app right now, do I have my app anywhere? Local host 51. Hey Kamil, how's it going? Is that how you pronounce your name? Is it Kamil or Camille, or how do you pronounce it? So this is supposed to be an outlined component. This does not look anything like this. Why does this not look anything like my component? Oh, because we are using no, it's not because of this guy. No, not at all. Oh, because this one. So outline card is a component that essentially wraps everything. Ooh, now I get it. But this is weird. Why is this small in card? Oh wow. No, I don't. No. Just no. I can go to sticky note and change this guy to sticky note, and wherever I'm trying to see to do, I need to say sticky note. Oh, but I don't have to use this guy at all, right? And here I can say sticky note item props, and this item is supposed to be a note from the types. And here I can say sticky note item props, right? So we got item. We could also, yeah, let's keep it this called item. Instead of this, actually, we can use the card component from material, and the variant is going to be outlined. Is that right? And this is supposed to be capital card. And I think now I should have a card. Yeah, there we go. So we got the pin as an action. I do want this to be on the right side. So maybe, is it a line? No. Action? No. Right? No. There's nothing in there. So maybe class name? Flex. Items? No. Justify end. There we go. So we got a pin here. And we can also do this outline as in class, and we can give this a max with sm. So we have this as a bit smaller, and also maybe text or mx auto, something like this. So we have this like this, and then my or maybe mb set to 8.
So we have some gap here as well. Okay, now we have a bunch of nodes that we can see here. But what I want to do is I'll go into the nodes here, and then this UL is going to be actually a grid. So we can say class name, grid calls 3. There we go. But I also want to make it a bit better. So I'll look into it. So for example, this UL has margin, but MX is set to auto. So I don't want MX auto because of the thing that I just did. So you can see now they look much nicer. And instead of the margin bottom 8, I can also remove this since now I'm using grid. So I'm using this grid, but I want the gaps in between. So I'll probably go here, and then here I can say gap 4, and there we go. Now we got some nice little gaps in there. So now we got a pin here. Let's do one thing really quick. For example, I could go to heroicons.com, and in here I can go and find pin. Do we have a pin? I don't have a pinned pin. I have a map pin, but I don't have a pin micro. Pinned? No. Star, maybe. Let's call this a star instead of pin. Okay, let's call this starred. Now I have to change everything. So if I go to pinned, and if I change this to starred, does that change the sticky notes as well? Or notes as well? So this is pinned at the moment. If I change this to starred, oh, I love it. Starred, awesome. Good. Then that means I can go to sticky note, and sticky note can also have the item. But yeah, we'll look into making this a star. So here we have star. What we'll do is in this card, we are also going to render a value, and here we can also say if the item dot starred. And if you remember the conditional rendering lecture, if you've seen this, then you already know what I'm going to do. I'm just rendering a SVG here that is supposed to be this guy, class name, and this is supposed to be stroke width, view box, stroke, fill. No, did I copy the SVG or the GSX? I copied the SVG, that's why. So I can copy the JSX now. Stroke line cap, stroke line join, stroke width. Good. If I go now here and maybe mark the first one as a starred true, then there you go. You can see the star right there. But I don't want it to be there. I want it to be on the right side. So I'll give this guy a relative position, and I'll give this guy the class name, an absolute, a top 2, and a right 2. Look at that now. But I also want to have the one that is filled, actually solid. So copy JSX. But now I have to do this again. I'm gonna copy the class name. I'm gonna have to put the class name right here. Where's the class name? Here's the class name. And if I say format document, doesn't format document for me. Doesn't like me. Format document. There we go. So the class name is this. Now if I go to my app, hey, look at that. Now you can see that this is a starred. So that means that if I want to now implement just a possibility of starring a component, I have to go all the way down here. Okay, cool, awesome, good. Okay, what am I missing actually? One of the things that I'm actually missing is that this node should not be here. I should be actually moving this to app.tsx here. Not that one, that one.
bring all that you need and pass notes as in notes, right? And then we go inside, we say that we have uh, we have actually a type called notes props, and these expects notes which are supposed to be of type note, and we have this notes component which essentially is a functional component of type note, this guy. And then here we can go ahead and we can say note, and we got the notes here, and we got the note item. But ooh, this is not good. This should be notes props. My brain almost stopped working for a second there. And what am I missing? Set notes is not being used. That's fine. So now the app should still be working. So if I refresh now, hey, this is working. If I go to inspect, this would not work here because my normal browser basically stops it from working. But where is my, I think this is my incognito. Yeah. So if I go to localhost 50173, this is where I have my nodes. So if I go to components, wait, what happened? Oh no, this is not incognito at all. Oops. Oopsie doopsie. Where's my incognito one? That's my incognito one. So if I refresh this, and I should also make one more thing, slightly one more thing, which is on the small screens, I want grid columns to be 2. Grid calls 2, MD, grid columns 3. So I have this as responsive. Hey, let's go. So now we have 2 instead of 3. And woo, look at that. Cool, awesome. So now I can actually clear this, and now we can have a look. So if I go to components, I can actually see that we've got a bunch of sticky notes right here. But essentially we have app, which has the state of all the nodes. I don't know if you can see that. No, I don't think you can see that. Now you can see that. Then we have the nodes, which gets this as a prop. Then we have each sticky node getting the item. We could also call, instead of item, we could also call it node, to be honest, to keep things consistent. So this is going to be node. Yeah, I don't know if I had item somewhere. Item 1 of 6. Where am I using item? Just those places. Okay, so just change that to node. Thank you. And does that change it here as well? Yeah, the node is node item. क्या बना रहे हो भाई? मैं बना रहा हूँ अपने नेक्स्ट रिएक्ट उर्दू कोर्स के अंदर का जो लेक्चर है उसके लिए एक एप्लीकेशन, नोट्स एप्लीकेशन. And I'll also do grid calls 1, sm grid calls 2. So initially we have 1, but do we have also a min width somewhere? Right? Do we have a min width anywhere? No. Yes. No. Card content for no. Okay, then we have this guy right here, 300 pixel. Okay. Then we move here, and we have also zoomed in quite a bit. So 150 is the right one. So here it looks small. You increase it, it becomes 2, and then it becomes 3. We should also have on this nodes the UL something like MX auto, so it's also centered always, because here we had a problem like this should not be the case. Why is it like this? The UL, why is it like this? This should be centered. So if I go to my code, it doesn't make it what I wanted it to do.
Max width fit content. This is what I wanted to do. Max content, min content, max content. Nah, no, I don't want it to be like that. I think what I want to do is justify center. Or no, I want it to be place. Huh? Content center. Is that the one? Place content center. Or place items center. Oh, what happened to this guy? Yeah, so if I try to make it center, it automatically does it. Maybe because it's I'm thinking. I think it could also be because of how React does it or the documentation does it. We have a minimum width of sort of, maybe because we have a box in there. We have minimum width of 275. Let's try that actually. Let's try to follow the documentation for once and import the भाई एक सवाल पूछना था शुभम, फौरन से पूछ लो. सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछते कभी भी. रिमेंबर डैट. सवाल डायरेक्टली पूछ लेते हैं. Okay, so we got the MUI. Now look at this. This looks nice. Ooh, not really. Should be 200. There we go. Nice. Okay, so we've got some notes. We can start some notes as well. Anime forever. Hello, Sanbai. Hope you're fine. I've just started my career as a full stack developer. I need to know, is it important to work on React TypeScript instead of normal JSX? Yes, to some point it will be important. The sooner you start learning it, the better it is. That's my take on it. And I hope that helps. Okay, I think I have the app ready, to be honest. I think I have the console logs there. I don't think I need this use effect, to be honest. I'm going to remove anything that I don't really want. We have the SVG here, blah, blah, blah. App TSX doesn't have set notes, but that's fine. We don't have to do that at the moment. The notes are being used here. शुभम तिवारी, कौन सा पेजिनेशन में मेथड यूज करूँ MongoDB से बैकएंड पर या React query से फ्रंट एंड पर? Depends on your use case, यार. It depends on the application itself, the use case, what the team decides. Both are viable options. अगर आपको, if you want all the data on the front end, or if you are using React query, and I'm talking about 10 stack React query, I think you can still use caching with that. So but then your backend should also be able to support it, right? If I'm not mistaken. I don't remember using the React query as well. So I don't know. To be honest, I think I don't know enough at this point. But maybe using React query is going to be better. I think. I have a gut feeling about it. Anime forever. Could you just provide me a clear answer for that? Why TS instead of JS? Any example for this? TS is just better. You cannot find bugs in JavaScript as easy as you can find on TypeScript. If I'm not using a variable, it tells me right here that I'm not using this variable. If I'm making a mistake, if I'm putting the ID this, for example, instead of this, if I try to say I have the ID 1, if you write this in JavaScript, JavaScript doesn't tell you, and this will fail at some point. But it will fail if you're just using JavaScript. This will fail only when it's running the code in production or on development, whatever. But when it's running in the browser, then you'll see, okay, 1 doesn't equal to the one that your code would normally match with. But because someone made a mistake in the code and you could not see it until it was actually produced while running or on runtime, it's bad. So TypeScript allows you to figure out issues first in your editor. And then also if I try to compile this code, it will not build at all. So there are a lot of benefits of using TypeScript over JavaScript. TypeScript does not have, for example, the types or the generics that we are using here. Sorry, JavaScript doesn't have generics or the types or the interfaces that we can use. So
There are a lot of reasons to use it, but just Google it and you'll find much more. But I think I provided you the simple answer that you needed. Okay, I think we're good, to be honest. Mm, okay, I will take a 5 or maybe 10 minutes break, and then I'll come back and then I'll record the lecture. I could try to record it during live stream as well, which will contain some bloopers. It will also contain some repetition. But if you want to learn use context for free, I think you can, yeah, you can come here and see how it works. And by the way, if you have not looked into the React free course, then you should look into it. I already shared the link in the chat. It's not free, but someone from Pakistan has donated $100 to make it free for almost 33 developers. So it's an Urdu slash Hindi. So you can follow the instructions on the link that I've shared just here, and hopefully you will get the course for free. Hmm. Shubham, TypeScript predicts the values, yes, but JavaScript also does that. So if I create a new JavaScript file, I will also get some values from it. For example, if I say JS or JavaScript, then if I start typing, for example, const person equals, and here I say name Ahsan, and here if I do console log and if I start typing person dot, you can see automatically it gives me IntelliSense. So IntelliSense is something different. IntelliSense is a language specific feature for editors, and even if you don't use TypeScript, JavaScript has this information, and that's perfectly fine. But the problem is, if I go ahead and here I say person dot name equals to 1234, JavaScript doesn't complain about it, and this is not a valid name as at all. Now the only the person who's coding this has to take care of all these things, and if you span this across huge teams, then everyone has to remember that the name property cannot be a number. Now I'm just talking about, for example, a property that is obviously super obvious that this has to be a string. But what about, for example, person dot salary? Sometimes the salary comes in you know string as well, so it could be something like 10,000, something like this. So it could be. Or what about, for example, person dot enrollment ID? Now the enrollment ID could be a number, it could also be a string, it could be something else as well. It could be 1234, it could also be ABC 123, it could be a unique ID. So it really depends when it comes to types. That's where TypeScript basically shines, that you can actually define a type on an object, on a variable, and then it helps you out, and it basically doesn't compile. So the biggest benefit of TypeScript is that it will not build your application if there are errors. JavaScript doesn't do that. But if that object is in different file, then TypeScript help with that. No, that's not true as well. If this file was also in somewhere else as well, you could still have the same thing. So if I had, for example, here we had file1.js, and you create another file, you say file2.js, and you do the same thing here. For example, if I copy this guy, and if I go in file1, I paste it, and then here I go ahead and say, hey, export person, or export default person, for example. So I'm exporting the person object from here. Now I can go to file2 here, and I can basically say here console log person, and you can see I'm importing this from file1. If I import this, press dot, I see the name. So it doesn't matter if you have it in the same file or not. The same file and the different file is handled by something else. It's called the modules, or ES modules, or CommonJS modules, or AMD modules. That's a completely different story. But JavaScript still provides you all the IntelliSense. If I create 50 different variables inside here, it would still give me the IntelliSense. The benefit of TypeScript is that it gives you types, classes, more features like decorators, interfaces. It allows you to do, for example, class inheritance. It could also allow to create namespaces, abstract classes. So there are a lot of benefits, but the major ones are for junior developers to understand this much better is that you cannot catch errors in JavaScript if
you're not running it on the browser. When you run it on the browser on runtime, you see the errors, but TypeScript can catch errors first of all at the build times, so nothing bad goes to production. But even before that, when you're actually writing your code, it catches errors there. So it gives you instant feedback. That's why TypeScript is so liked among the dev community, and it's probably one of the best things that Microsoft has done ever. I don't really like Microsoft, but I do like VS Code. I do like GitHub now that Microsoft has GitHub, and I also have yeah, I also like TypeScript quite a lot. So I hope that makes sense. But I had to go to a break of 10 minutes, so I'm gonna be right back. Hopefully, then I'll record the lecture, and I can put the clock in the right timer as well. Where's the timer? Here's the timer. Browse, get the 10 minutes one, and there we go. See you in a bit.
Hello, I'm back. Okay, मेरे कैमरे की बैटरी भी चेंज हो रही है तो I'll change that. Hey, npm start import blast from blast mp3. उमर खताब आलम चुकिया. ठीक हो गया उमर, बिल्कुल ठीक है, बेस्ट है. चलें, गुड हो गया. मैं 1 मिनट में आता हूँ और आई विल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर और फिर हम स्टार्ट करेंगे. देन आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर और फिर इसको हम रैप अप करेंगे. ठीक है, तो आई विल राइट बैक. ओके, चलें, लेट्स बिगिन. Also bring my seat. And then also the back. ठीक हो गया, चलें जी. Alrighty, I will have to remove you folks, sorry, from the chat and from the screen, but I can see your chat. So I will probably not be responding to any messages for a while because I'm recording the whole lecture now. So let's have a quick prepare for this. So what I'll do is oh, but I can't do it. Okay. Let's see. Was I think there was also a state management recap. I just want to make sure there's no spelling mistake. React properly and context API, state management recap, use state hook. Okay, so this one needs to be fixed. If I go to context API, we're looking at disadvantages, which was here. So we need a line there. So we have disadvantages and then hard to maintain. So here we can also do as, and then we can do something like disadvantages of prop drilling or prop drilling, and then we can go ahead with this. And whoa, what happened? Okay, so what is prop drilling? This one, advantages of prop drilling, solution, context API, blah blah blah. Okay, good. I think we are good to go. So this video is going to be removed after the live stream ends. So those of you who have joined can take it. Or now that I think about it, I think I should just go offline and record it. What do you think? Do you want to see it being recorded, or should I go offline and then record it? Because then when I'll be editing, I would have this huge file to work with. We are already 2 hours in the, or probably not, because I just start recording now. Okay, no, it doesn't matter. So I can start, and if you are watching this on YouTube, then yeah, you learn also along the way as well. So I think we can record and live stream at the same time. But this will be in Urdu, and maximum folks who are, or majority of the folks who are watching usually are not, don't understand Urdu. But we'll take it from there.
I'll also hide the fan. That's not good. There you go. This looks much nicer. Maybe I can take off my glasses as well. Okay. And let's build this. I'm also gonna quickly take a sort of state for this. So use effect, create a new folder. We use context, app, delete this guy, WinRAR. Do you agree that WinRAR is the best software that has been created in the last 10 years, maybe, or maybe more? Start. The best free software, or the best software that has a license, but yeah, nobody buys it. So then we have start here. We can go to start and just paste here, just for the sake of just for the sake of record keeping. All right, I think we can start now. So I'm gonna actually remove this, hero icons, React component card, Exali draw. There we go. And we can also look into the code. So here we go. And I can actually add git add git commit context start files. Okay, I think I'm ready. And then I just need to also add my app here. But I think when the time comes, then we'll go that route, but I'll at least scroll it till here. Okay, I think we're good. Alrighty, there we go. Can I scroll this like this? This looks good. This looks good. This looks good. And we can now go to this. Okay, awesome. So we are now recording the lecture. Okay, and I'll switch to Urdu now. Starting in 3. What is this? No. Okay. Don't ruin my shirt. Okay. Rabbi Shrali Sadri wa Yassir li Amri. Starting in 3, 2, 1. हेलो और वेलकम इस लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि रिएक्ट, प्रॉप ड्रिलिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, और कॉन्टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए जब हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होती है, और क्यों करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा स्टेट मैनेजमेंट का रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक जो लेक्चर्स के अंदर देखा उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज स्टेट का हुक, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक रिएक्ट कंपोनेंट में जो कि फंक्शन कंपोनेंट होता है। तो यूज स्टेट वो तरीक़ेकार है जिससे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं एक रिएक्ट के कंपोनेंट में। अब हम बात करते हैं प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। और प्रॉप ड्रिलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन आता है रिएक्ट के अंदर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी रिएक्ट डेवलपर के लिए इसको जानना और इसको अवॉइड करना, ताकि इसको हम इस्तेमाल ना कर रहे हों या इससे बेहतर अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हों। तो प्रॉप ड्रिलिंग होती क्या है? अगर हमारे पास एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जो बहुत सारे लेवल्स पे है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐप है, ऐप के अंदर कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास प्रॉप्स पास हो रही हैं ऐप से लेकर सबसे नेस्टेड कंपोनेंट तक, तो इसको प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। और इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक्साली ड्रॉ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारी नोट्स की एक एप्लीकेशन है, और इसमें बहुत सारे नोट्स के कंपोनेंट, नोट 1, नोट 2, और इस तरह हमारे पास लेट से 6 नोट्स के कंपोनेंट है। हर कंपोनेंट के अंदर कुछ एक्शंस मौजूद हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार, इस नोट को अगर मुझे करना हो और यहाँ पे एक स्टार दिखाना हो तो वो मैं दिखा सकता हूँ, और इसी तरह अगर मुझे डिलीट करना हो नोट को तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर हमें इस ऐप को देखें जिसमें हमें नोट्स नज़र आ रहे होंगे पूरी एप्लीकेशन के अंदर, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा। हमारे पास टॉप लेवल पे ऐप कंपोनेंट होगा, उसके बाद हमारे पास नोट्स का कंपोनेंट होगा जिसमें नोट्स की एरे होगी, और ये बेसिकली नोट्स को रेंडर करेगा। और उसके बाद हर नोट के लिए हमारे पास एक स्टिकी नोट का कंपोनेंट है। तो जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये एक स्टिकी नोट का कंपोनेंट है जो कि हमारे इस नोट्स कंपोनेंट के अंदर नज़र आ रहा है, और नोट्स कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट के अंदर है। तो ये हमारे पास हायरार्की है ऐप, नोट्स
और फिर बहुत सारे स्टिकी नोट्स कंपोनेंट। और ये हम अपनी एप्लीकेशन पे अभी देखेंगे। तो जो start.zip की फाइल है, आप इसको डाउनलोड करें, npm इंस्टॉल करें, npm रन डेव करें, तो आपके पास लोकल होस्ट 5173 पे ये एप्लीकेशन रन हो रही होगी। और अगर हम अपनी एप्लीकेशन पे जाएँ तो ये इस तरीके से दिखती है। अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नोड के कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे एक चीज़ स्टार हुई हुई है, यहाँ स्टार का एक एक्शन मौजूद है और अभी डिलीट का नहीं है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसको राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें और अगर आपने रिएक्ट डेव टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आप यहाँ कंपोनेंट्स पे जा सकते हो और कंपोनेंट्स पे देख सकते हो इस पूरे ऐप की हायरार्की। तो जो मैं आपको यहाँ पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, वो इस ऐप कंपोनेंट को करवाना चाह रहा हूँ कि ऐप के अंदर हमारे पास नोट्स मौजूद हैं। मैं वापस से ज़रा कंपोनेंट्स पे जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप के अंदर नोट्स मौजूद हैं और हर नोट्स कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक स्टिकी नोट मौजूद है। तो ये पहला स्टिकी नोट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 स्टिकी नोट कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये नोट्स का कंपोनेंट है। तो ये वही हायरार्की है जो अभी हमने एक्सेलीड्रॉ पे देखी। ऐप के अंदर नोट्स, नोट्स के अंदर बहुत सारे स्टिकी नोट कंपोनेंट। अगर हम इस स्टेट पे देखें कि यहाँ पे स्टेट का क्या काम चल रहा है, तो ऐप के अंदर डिफाइन हुई हुई है स्टेट, यानी कि एक यूज स्टेट इस्तेमाल हो रहा है ऐप के अंदर जिसके अंदर नोट्स पड़े हुए हैं। अगर मैं अपने कोड के अंदर जाऊं तो आपको नजर आएगा कि ऐप tsx ही वो फाइल है जिसके अंदर यहाँ पे हम यूज स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐप के अंदर एक स्टेट वेरिएबल है जिसका नाम है नोट्स और इस नोट्स वेरिएबल के अंदर बहुत सारे नोट्स ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। फिर हम ये काम करते हैं कि हम इस नोट्स को एज अ प्रॉप पास कर देते हैं नोट्स कंपोनेंट के अंदर। तो ये वेरिएबल नोट्स प्रॉपर्टी, आप इसको चाहो तो नोट्स एरे कह सकते हो, इट डजेंट रियली मैटर, ये चेंज हो जाएगा। तो नोट्स के कंपोनेंट के अंदर हम पास करते हैं नोट्स की एरे को और ये जब नोट्स के कंपोनेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पे पास हुई हुई नोट्स की एरे पे हम मैप चलाते हैं और मैप के अंदर हम ये कहते हैं कि जितने भी नोट्स हैं उसमें हर नोट आइटम को उठाया जाए और हर नोट आइटम के रिस्पॉन्स में एक स्टिकी नोट बना दिया जाए। तो बेसिकली हर नोट आइटम के लिए हम एक स्टिकी नोट रेंडर कर रहे हैं यूआई पे। तो ये यहाँ पे एरे में से हर आइटम उठाएगा, पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, और हर एक के लिए एक स्टिकी नोट रेंडर कर देगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ऐप tsx पास करती है नोट्स की एरे। तो ऐप पास करती है नोट्स को नोट्स कंपोनेंट में और नोट्स जब हमें मिल जाते हैं तो हम स्टिकी नोट के अंदर हर एक इंडिविजुअल नोट आइटम को पास करते हैं। यानी कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पे मिला हुआ है उसको उसके स्टिकी नोट कंपोनेंट के अंदर पास कर देते हैं नोट एट्रीब्यूट के साथ। और फिर जब हम अंदर जाते हैं स्टिकी नोट के तो आपको नजर आएगा कि हम बेसिकली उस नोट को जो कि पास हुआ है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे रेंडर कर देते हैं और उसका टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बेसिकली हम काम कर रहे हैं पूरी हायरार्की में और यही आपको नजर आएगा यहाँ पे। ऐप के अंदर वो स्टेट वेरिएबल है। अगर आप नोट्स पे क्लिक करो तो नोट्स में हमें ये प्रॉप मिलती है जिसमें ऐप पास करता है नोट्स के एरे को। तो हमारे पास ये प्रॉप्स की नोट्स की एरे आ जाती है। फिर हम हर स्टिकी नोट को अगर देखें तो हर स्टिकी नोट की प्रॉप के अंदर ये जो नोट का वेरिएबल है इसके अंदर उसका स्पेसिफिक नोट आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे नोट 1 है तो नोट प्रॉप की प्रॉपर्टी हो गई ये पूरी वैल्यू। इसी तरह नोट 4 को अगर हम देख लें तो इसका जो प्रॉप है उस पर 4th नोट आ रहा है जो भी हमने रेंडर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब हम चलते हैं और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। इस पूरी हायरार्की के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है स्मार्ट कंपोनेंट और डम कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट। किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर या आप किसी अच्छे अगर टीम के अंदर काम कर रहे हो जो रिएक्ट की टीम है तो उसमें आपको ये डिस्कशन ज़रूर सुनाई देगी कि स्मार्ट कंपोनेंट क्या है और डम कंपोनेंट क्या है। आम तौर पे जो पेज होता है उस पेज को हम स्मार्ट कंपोनेंट कहते हैं। अभी आप ऐप के पेज पे हो क्योंकि एक ही सिंगल पेज है पूरी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफाइल का एक अलग पेज हो, कॉन्टैक्ट्स का एक अलग पेज हो, पोर्टफोलियो का एक अलग पेज हो, तो हर पेज को हम आम तौर पे कहते हैं कि ये एक स्मार्ट कंपोनेंट है। और स्मार्ट कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटा कहाँ से लाना है। फॉर एग्जांपल ये नोट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये नोट्स अभी एक हार्ड कोडेड अरे से आ रहे हैं। तो अगर हम ऐप tsx में जाएं तो ये नोट्स अभी एक हार्ड कोडेड अरे से आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता था कि ये नोट्स हम एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करें और इसको असल में एक बैकएंड डेटा से लाएं या बैकएंड एपीआई से लाएं। तो चाहे ये बैकएंड एपीआई से आए या चाहे ये हार्ड कोडेड एरे से हो, इसकी इन्फॉर्मेशन इस ऐप कंपोनेंट में मौजूद है क्योंकि यहीं पे इसका कोड लिखा हुआ है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो इट्स नोट्स कंपोनेंट को कोई आइडिया नहीं है कि ये नोट्स कहाँ से आ रहे हैं। इसको बस ये पता है कि यार एक पेरेंट कंपोनेंट है जो मुझे नोट्स की एरे दे देगा, मेरा काम है उसको रेंडर करना। तो इस नोट्स को इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये नोट्स की एरे आती कहाँ से है, इसको सिर्फ ये पता है कि ये पेरेंट्स से आएगी। अब पेरेंट्स में वो हार्ड कोडेड एरे हो, वो एपीआई से आए, वो आप लोकल स्टोरेज से उठा रहे हो, कहीं से भी ये डेटा बन के आए, नोट्स कंपोनेंट को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह के कंपोनेंट को हम कहते हैं डम कंपोनेंट, जिसको कोई आइडिया नहीं हो कि स्टेट
किस तरीके से बन रही है या जो एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक है वो किस तरीके से काम कर रही है। नोट्स कंपोनेंट का सिर्फ ये काम ये है कि वो एक एरे ले और उस एरे के अंदर जितने भी नोट्स हैं उसको पास कर दे उसके इंडिविजुअल स्टिकी नोट पे। सिर्फ ये काम है नोट्स कंपोनेंट का। इसी तरीके से स्टिकी नोट कंपोनेंट का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि वो उस नोट कंपोनेंट को रेंडर कर दे। तो अगर हम ब्लूपर तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन को देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पे हर नोट कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है, अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो ये जो पूरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये स्टिकी नोट है। तो इस स्टिकी नोट कंपोनेंट का सिर्फ वाहिद काम है और वो ये है कि ये इस जो भी नोट है इसको रेंडर करता है यूआई पे। इस बटन पे क्या हो रहा है इसका इस नोट को कोई काम नहीं है या इसको कुछ नहीं पता। ये नोट की इंफॉर्मेशन आई कहाँ से, इसका स्टिकी नोट को कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ना उसको इसकी कोई टेंशन है। इसको सिर्फ ये पता है कि मुझे नोट्स कंपोनेंट या मेरा पेरेंट कंपोनेंट जो भी नोट दे रहा है मुझे बस उसको रेंडर करना है। तो ये भी एक डम कंपोनेंट की एग्जांपल है। और जितने हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डम कंपोनेंट बनाते हैं उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन परफॉर्मेंट होती है, क्योंकि जितने आप डम कंपोनेंट बनाते हो उतना आसान होता है उसको टेस्ट करना। फॉर एग्जांपल जब मैं इस नोट्स कंपोनेंट को टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको हार्ड कोडेड कोई भी एरे दे सकता हूँ और मैं कोई भी टेस्ट लिख सकता हूँ उसके अगेंस्ट, मुझे असल में कोई एपीआई कॉल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं ऐप कंपोनेंट को टेस्ट करूँगा तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एरे जो मैंने यहाँ लिखी हुई है क्या मुझे यही एरे इस्तेमाल करनी है या मुझे बैकएंड से लानी है। और अगर वाकई बैकएंड से अरे आती है एप्लीकेशन के अंदर तो मैं अपने टेस्ट में क्या करूँ, क्योंकि टेस्ट में तो एक्चुअल बैकएंड से डेटा नहीं लाया जाता, हम मॉक करते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को। तो ये थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं। तो जितना डम कंपोनेंट होगा उतना आसान होता है टेस्टिंग के लिए। और यही आप यहाँ पे भी देखोगे इस पूरे कंपोनेंट की कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है ही नहीं सिवाय इस नोट चीज़ के। तो इस कंपोनेंट को जो भी नोट मिलेगा ये उसको रेंडर कर देगा, इसके अलावा इस कंपोनेंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी ईजी टू वर्क विद डम कंपोनेंट्स एज कम्पेयर टू स्मार्ट कंपोनेंट्स। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई ना कोई स्मार्ट कंपोनेंट टॉप पे होगा जो कि डम कंपोनेंट्स को वैल्यू पास कर रहा होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्मार्ट कंपोनेंट कर क्या रहा है। तो ये जो स्मार्ट कंपोनेंट जो मैंने डैश्ड आउटलाइन किया हुआ है ऐप कंपोनेंट, ये कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा है। पहला काम तो ये कि ये नोट्स की जो एरे है इसको रख रहा है और इसके बाद फिर ये इस नोट्स की पूरी एरे को पास कर रहा है एज अ प्रॉप नोट्स के कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ये दो काम कर रहा है। पहले तो नोट्स की एरे को देख रहा है कि ये एरे आएगी कहाँ से, बनेगी कहाँ से, और सेकंड काम ये पास कर रहा है इसको नोट्स के जरिए। अब ये जो पास कर रहा है नोट्स की एरे इसको कर क्यों रहा है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को उल्टा कर दें और हम बात करें कि ये एप्लीकेशन है क्या और ये क्यों काम कर रही है या हमें इन नोट्स को लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो उसका एंड रिजल्ट ये है कि किसी तरीके से आखिर में ये स्टिकी नोट रेंडर हो जाए यूआई पे। इसका मतलब है मुझे आखिर में ये नोट्स दिखाने हैं अपने यूआई पे। अब ये कैसे भी आए, तो इस नोट दिखाने के लिए पहले मुझे अपनी ऐप के अंदर टॉप लेवल पे एक एरे बनानी पड़ी, इसको स्मार्ट कंपोनेंट बनाना पड़ा। फिर उससे यहाँ पे हमने नोट्स के अंदर वैल्यू पास की और फिर नोट से हर इंडिविजुअल नोट के पास वैल्यू गई। तो ये पूरा प्रोसेस चला। तो इसीलिए स्मार्ट कंपोनेंट के अंदर नोट्स की एरे डिफाइन हो रही है और यही नोट्स बेसिकली पास होते हैं नोट्स के कंपोनेंट में। और उसके बाद नोट से इंडिविजुअल स्टिकी नोट के अंदर, सारे स्टिकी नोट के अंदर एक एक पर्टिकुलर नोट जो है वो पास होता है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पिन नोट भी एक चीज़ है जो पास कर रहे हैं, लेकिन इसको फिल वक्त हमने अपने कोड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको हम करेंगे इसको चेंज। तो लेट्स से कि हम ये काम कर रहे हैं कि ये जो पिन नोट है ना इसको हम ब्लूपर तो लेट्स से हम ये काम करें, जो पिन नोट है इसको हम स्टार नोट कह देंगे, क्योंकि हम अपने यूआई पे देख चुके हैं कि यहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट स्टार नोट। तो अगर ये पिन नोट या स्टार नोट भी हमें इस्तेमाल करना है तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा। जहाँ पे ये स्टार का बटन लगा हुआ है ये कहाँ पर है, ये है स्टिकी नोट के अंदर। स्टिकी नोट के अंदर स्टार का बटन मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर मैं क्लिक का कहीं पे इसकी फंक्शनैलिटी लिखना चाह रहा हूँ तो वो कहाँ होगी, वो स्टिकी नोट के अंदर ही होगी, क्योंकि कार्ड वहाँ पे है तो उसका क्लिक हैंडलर भी वहाँ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टिकी नोट तो डम कंपोनेंट है, इसको कोई आइडिया नहीं है स्टेट का, ना ये स्टेट चेंज करेगा। स्टार का मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका स्टार अगर हुआ हुआ है तो हट जाए, और अगर हटा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नोट 2 के अंदर नहीं है तो लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर हम इस नोट को चेंज करने जा रहे हैं या इसको तब्दील करने जा रहे हैं। एक डम कंपोनेंट को स्टेट वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर स्टेट इस कंपोनेंट की नहीं है तो ये कंपोनेंट उसको चेंज नहीं करेगा। अभी सिचुएशन ये है कि इस स्टिकी नोट के अंदर कोई स्टेट नहीं है, इसको एक प्रॉप मिलती है बाहर से, इसको बाहर से नोट मिलता है और उस नोट के अंदर स्टार्ट की प्रॉपर्टी ट्रू या फॉल्स है।
अगर मैं इस स्टार के बटन पे क्लिक करूं नोट 1 के अंदर, तो इस स्टार्ड को ट्रू से हो जाना चाहिए फॉल्स, यानी कि ये काम होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार चला गया, या अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाना चाहिए, अब यहाँ पे स्टार आ गया। लेकिन किसी भी डम कंपोनेंट को अव्वल तो कोई स्टेट चेंज नहीं करनी चाहिए, और अगर वो डम कंपोनेंट नहीं भी है लेट से, और स्मार्ट कंपोनेंट भी है, तो भी आने वाली प्रॉप को चेंज नहीं करना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली खुद चेंज नहीं करते, और खासतौर पे प्रॉप्स अगर आ रही हैं तो उसको हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से चेंज नहीं करते। अब मसला कहाँ आता है? चलो स्टिकी नोट के अंदर हम चेंज नहीं करें, तो हमें कहाँ चेंज करना चाहिए? क्या हमें नोट्स के अंदर चेंज करना चाहिए? अगर हम नोट्स पे जाएं तो आपको नजर आएगा स्टेट नोट्स के अंदर भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉप्स आ रही हैं। तो इस कंपोनेंट में भी प्रॉप्स आ रही हैं, और इसमें प्रॉप्स मजीद बाहर से आ रही हैं, यानी कि ऐप से आ रही हैं। तो फिर क्या हमें ऐप के अंदर करना चाहिए? हाँ, हमें ऐप के अंदर जहाँ पे स्टेट डिफाइन है, यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। अब ये आ गई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि हमारे ब्लूपर ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि हमारा एक्शन जो है वो स्टिकी नोट कंपोनेंट से ट्रिगर हो रहा है, यानी कि ये बटन स्टिकी नोट में है जहाँ से मैं क्लिक करूँगा, और मुझे जहाँ चेंज करना है वो ऐप के अंदर है। तो ये पूरा यहाँ से घूम के ऐप के अंदर कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो तरीक़ेकार यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर, वो ये है कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी अगर हमें पास करनी है तो हम इसको प्रॉप्स के थ्रू पास करते रहते हैं। जैसे सारे नोट्स पास हुए यहाँ पे, और एक एक नोट स्टिकी कंपोनेंट में पास हो गया बाद में। इसी तरीके से अगर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है ऐप के अंदर, लेकिन किसी चाइल्ड कंपोनेंट से मुझे पास कराना है, तो मुझे उस एक्शन का फंक्शन बना के पूरा पास करना पड़ेगा उस चाइल्ड कंपोनेंट तक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पिन नोट का फंक्शन जो ट्रिगर होना चाहिए, ये ट्रिगर होना चाहिए ऐप कंपोनेंट में, सही है। लेकिन जो क्लिक का फंक्शन है वो तो स्टिकी नोट के अंदर है। तो होगा ये कि मुझे इस पूरे फंक्शन को यहाँ से पास करना पड़ेगा नोट्स के अंदर, और फिर यहाँ से पास करना पड़ेगा हर स्टिकी नोट के फंक्शन के अंदर, तब जाके ये पिन नोट कहीं पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। तो हम जाते हैं अपने कोड में, और यहाँ जाके हम ऐप TSX के अंदर कंपोनेंट रजिस्टर करवाएंगे, और इसके अंदर हम कहेंगे ब्लूपर। तो हम जाते हैं अपने ऐप TSX के अंदर, और यहाँ पे जाके हम अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल कहते हैं स्टार नोट। तो हम यहाँ पे कहते हैं स्टार नोट, और इसके अंदर हमें बेसिकली नोट ID चाहिए जो कि एक नंबर है, ठीक है। और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब हमें ये काम करना है इस कोड के अंदर कि जो भी ID है उस आइटम को हम ढूंढें, और उस आइटम की जो स्टार्ड प्रॉपर्टी है उसको फ्लिप कर दें। तो हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ कहेंगे सेट नोट्स, और इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम यहाँ के कहेंगे नोट्स डॉट मैप, और हम पूरे नोट्स पे मैप चला रहे हैं। इसमें हम एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करोगे, एरो ब्रैकेट ब्लूपर, और इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद एरो फंक्शन, और बेसिकली ये कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ नोट आइटम आ जाता है, और दूसरा आता है यहाँ पे इंडेक्स। तो हम ये चेक करेंगे कि ब्लूपर, और इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे नोट आइटम। फिर हम ये करेंगे कि हम सीधा सीधा यहाँ से रिटर्न कर देंगे नोट आइटम को, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हम बेसिकली इस पॉइंट पे यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे स्टार नोट का फंक्शन क्लिक होता है, आप सेट नोट्स के अंदर जो भी करंट नोट्स की प्रॉपर्टी है उसको ही दोबारा से सेट कर दो, कोई चीज़ चेंज ना करो, ठीक है। और ये नोट ID नहीं होगा, नोट आइटम होगा, सही है। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरे पास स्टार नोट हुआ है, या इसको आप टॉगल स्टार नोट कह सकते हो, वट एवर, इसको कहते हैं टॉगल स्टार नोट फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैचिंग का आइटम आ जाए जिसको मैं टॉगल कर रहा हूँ, तो उसके साथ हमें कुछ चेंज करना है। तो यहाँ हम कहेंगे इफ़ नोट आइटम डॉट ID इक्वल्स टू नोट ID जो पास हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे रिटर्न। हम ऑब्जेक्ट स्प्रेड इस्तेमाल करते हुए करंट नोट आइटम को स्प्रेड करेंगे, और सिर्फ स्टार्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम फ्लिप कर देंगे। तो हम कहेंगे नॉट नोट आइटम डॉट स्टार्ट। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं टॉगल स्टार्ट करता हूँ किसी भी नोट को जिसकी मुझे ID मिली है, तो उस पर्टिकुलर नोट की स्टार्ट को फ्लिप कर दो और उस आइटम को रिटर्न करो। और अगर वो आइटम नहीं है और बाकी आइटम्स को हम देख रहे हैं इस मैप के अंदर, तो बाकी आइटम्स को कुछ ना करें, कोई चेंज ना करें, तो ये बेसिकली फ्लिप कर देता है टॉगल स्टार्ट नोट को। अब हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है और हमें पता है हमें ये काम करना है ऐप के अंदर। जब हमने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो अब इसको हम स्टिकी नोट्स तक कैसे लेके जाएं?
वही बात आ जाती है कि ऐप से जाएगा नोट्स पे, नोट्स से जाएगा स्टिकी नोट्स पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जाना पड़ेगा नोट्स के अंदर। यहाँ जाके नोट्स की जो प्रॉप है जिसमें अभी सिर्फ ये नोट्स लेता है, हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, और हमें यहाँ जाके इसको कहना पड़ेगा कि ये स्टार या टॉगल स्टार नोट लेगा, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें देनी होती है नोट आइटम आईडी या नोट आईडी, जो कि नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन बता दी, और इसको आप वॉइड कह सकते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ सेट नोट्स को कॉल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि ये फंक्शन पास करना ज़रूरी है। अब आपको ऐप TSX कह रहा है कि आपने ये फंक्शन तो पास ही नहीं किया हुआ, तो अब हम इसे पास करेंगे। तो हम कहेंगे टॉगल स्टार्ट नोट, और यहाँ हम कहेंगे टॉगल स्टार नोट, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप सेम भी रख सकते हो, इसका नाम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मैं इसको सेम रख रहा हूँ फॉर नाउ। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन को, यानी कि टॉगल स्टार्ट नोट जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, इसको हम पास कर रहे हैं एज अ एट्रीब्यूट इस नोट्स के अंदर जिसका नाम है टॉगल स्टार्ट नोट। तो यहाँ पे भी हमें उसी नाम से ये फंक्शन मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लाइन 11 पे सिर्फ नोट्स को ले रहे हैं, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम टॉगल स्टार नोट को भी यहाँ पे ले लेंगे। अब हमारे पास ये फंक्शन ऐप से ये वाला फंक्शन नोट्स के अंदर आ गया। क्या हमारा काम खत्म हो गया? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि अभी भी क्लिक का जो फंक्शन है, जो बटन है हमारे पास स्टार का, वो पड़ा हुआ है स्टिकी नोट के अंदर, यानी कि ये बटन स्टिल स्टिकी नोट के अंदर है। और अब हमारे पास नोट्स के अंदर, एटलीस्ट प्रॉप्स के अंदर टॉगल स्टार नोट आ गया है। तो ये एक लेवल अंदर तो आ गया, लेकिन ये स्टिकी नोट तक अभी तक ये प्रॉप पहुंचा ही नहीं है। जब ये प्रॉप पहुंचा ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं स्टार के क्लिक पे उस फंक्शन को नहीं कर सकता कॉल। तो अब हमें ये काम करना पड़ेगा कि जो अभी हमने नोट्स के साथ किया, कि हमने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की, फिर उसको यहाँ पे गेट किया, यही काम हमें स्टिकी नोट में भी करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे स्टिकी नोट पे। स्टिकी नोट में हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे टॉगल स्टार नोट, ये एक लेगा नोट आईडी जो नंबर होगी, और नंबर के बाद हम यहाँ पे कह देते हैं ये वॉइड है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जैसे नोट ले रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे ले लेंगे टॉगल स्टार नोट। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो नोट्स रोना शुरू कर देगा कि स्टिकी नोट में तो आप ये पास ही नहीं कर रहे हो। तो हम जाके यहाँ पे कहेंगे टॉगल स्टार्ट नोट, टॉगल स्टार नोट। अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने ऐप से पास करना था टॉगल स्टार्ट नोट नोट्स के अंदर। तो पहले हम नोट्स पे गए, हमने नोट्स में ये कैपेसिटी डाली कि ये एक्सेप्ट कर सके टॉगल स्टार्ट नोट को ऐप से। तो हमने ये डिफाइन किया, फिर हम यहाँ आए और हमने इसको यहाँ से पास किया। फिर हमें नोट्स से पास करना था ये वेरिएबल स्टिकी नोट पे। तो पहले हम स्टिकी नोट पे गए, हमने यहाँ एक प्रॉप नई ऐड की, उसके बाद हम इसको पास कर सके इस तरीके से इस प्रॉप में। अब फाइनली हमारे पास ये टॉगल स्टार्ट नोट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब मैं यहाँ बटन पे जाऊँगा, तो अब मैं इस पर ऑन क्लिक लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ ऑन क्लिक पे कह सकता हूँ कि इस पर एक फंक्शन कॉल करो, जिसमें हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे टॉगल स्टार नोट, और इसके अंदर हम आइटम डॉट आई पास कर देंगे। तो आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पे नोट का वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे नोट डॉट आई दे देंगे। ये नोट डॉट आई डायरेक्टली पास हो रही है टॉगल स्टार्ट नोट पे, जो आखिर में हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर ये सेट नोट्स को कॉल कर देगा। इसको ज़रा आप डीबग करके देखते हैं। तो अगर हम अपनी ऐप पे जाएं, तो अब स्टिकी नोट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये आ गया टॉगल स्टार्ट नोट। अगर हम दूसरे पे क्लिक करें, तो यहाँ पे भी टॉगल स्टार्ट नोट ये फंक्शन मौजूद है, और ये फंक्शन बेसिकली इसी फंक्शन को रेफर कर रहा है जो हमने टॉप ऐप में क्रिएट किया हुआ है। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं। हम जाएंगे और हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे लाइन 41 पे। तो ये टॉगल स्टार्ट नोट जहाँ फंक्शन ऐप में डिफाइन हुआ है, ये वहाँ पे है। और दूसरा हम जाके लगाएंगे इस नोट पे या स्टिकी नोट कंपोनेंट में। जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो ये वो फंक्शन है जो क्लिक पे कॉल होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ जाके इसको स्टार पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं ये क्लिक का फंक्शन कॉल हुआ। हमारे पास यहाँ पे नोट की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि नोट की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास हुई हुई है। इसी तरीके से, या एज अ प्रॉप पास हुई हुई है। इसी तरीके से ये फंक्शन भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि ऐप से हमारे पास चलता हुआ ड्रिल होता हुआ यहाँ तक आया है। अब जैसे ही मैं इसको टॉगल स्टार्ट नोट पे स्टेप इन करता हूँ, तो ये चला जाता है हमारे ऐप के फंक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि ऐप से नोट्स और नोट से स्टिकी नोट पे आ गया। अब आप इस चीज़ में देख रहे होंगे कि यार मैंने ऐप तो ऑन किया है यहाँ पे डीबग करने के लिए, स्टिकी नोट भी ऑन किया है, लेकिन जो बीच का पूरा कंपोनेंट है हमारे पास नोट्स, उसको तो घास ही नहीं डाली, या उससे कुछ पूछा भी नहीं कि यार आप क्या कर रहे हो बीच में खड़े होके। तो यही मजाक है कि अगर इस हायरार्की के अंदर 5-6 कंपोनेंट बीच में और आ जाते हैं ना, कि नोट्स के साथ
कोई नोट्स इनर कंटेनर होता या स्टिकी नोट रैपर होता, तो वो सारे बेचारे के बेचारे कंपोनेंट खामोशी से खड़े रहते और वो कुछ भी नहीं करते। सिर्फ जहाँ पे वो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है उस जगह तक फंक्शन पहुँचाने के लिए पूरा ऐप से हर कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करते हुए हमें वहाँ तक लेके जाना पड़ता, जिसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, और ये प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस पूरी हायरार्की में नोट्स के अंदर ये जो स्टार्ट नोड था, इसने कुछ भी काम नहीं किया सिवाय इस काम करने के कि ये पास करे जो ऐप से आ रहा है उसको स्टिकी नोट में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगर मज़ीद आगे चलें तो आप देखेंगे कि फंक्शन पूरा चलाने पे यहाँ से स्टार हट गया। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे ज़रा आपको इसको दोबारा चला के दिखाता हूँ। जब हम स्टार पे क्लिक करते हैं तो स्टार आ जाता है, जब हम स्टार से हटा देते हैं तो ये हट जाता है, और ये ऑब्वियसली इस ऐप TSX के अंदर यहाँ जाके चेंज होकर दिख रहा है। और आप यहाँ पे इसको इस कंपोनेंट के अंदर भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे हम रिट्राई करें और यहाँ पे जाके हम ऐप के अंदर स्टेट को सिर्फ देखना स्टार्ट करें, तो पहले कंपोनेंट पे अगर हम इसको ओपन करें तो आपको नज़र आ रहा है ये स्टार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब मैं जाके इसको स्टार कर देता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टार ट्रू हो गया, ये चीज़ चेंज हो गई। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो स्टार क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारा जो कंपोनेंट है, जो ये पूरा कोड हमने लिखा है, वो बेसिकली यही काम कर रहा है कि जो भी मैचिंग आइटम होगा जिसको हम टॉगल स्टार कर रहे हैं उसके स्टार को फ्लिप कर देता है, बाकी सारे आइटम्स को वैसे ही रिटर्न करेगा, लेकिन जिस आइटम को हम चेंज कर रहे हैं उसको बेसिकली फ्लिप कर देगा। तो आप जाके बाकियों को भी स्टार्स करके देख सकते हो इस तरीके से, और आप उसका टॉगल भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ नज़र आई कि सिर्फ एक छोटी सी फंक्शनैलिटी के लिए, टॉगल स्टार नोट के लिए, मुझे पूरा का पूरे कंपोनेंट्स चेंज करने पड़े, ऐप चेंज करना पड़ा, नोट्स चेंज करना पड़ा और स्टिकी नोट चेंज करना पड़ा। अब हम एक और एग्जाम्पल इसकी लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और दुख हो और दर्द हो और मुझे भी हो। तो हम इसके लिए जाते हैं, टॉगल स्टार नोट के अलावा एक नई फंक्शनैलिटी क्रिएट करते हैं जिसको हम कहेंगे डिलीट नोट। ठीक है, तो कॉन्स डिलीट नोट, और इसका सेम सिग्नेचर हम रखेंगे। इस डिलीट नोट में हमें ये कराना है कि जो भी नोट आइटम डिलीट होना जा रहा है उस आइटम को हम डिलीट कर दें UI से, या उसको स्टेट में से डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, अब स्टिकी नोट पे जाके हम जाते हैं और एक बटन और क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम देंगे डिलीट का। तो हम जाते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे जाके एक नया बटन ऐड कर रहे हैं और इस बटन को हम कहेंगे फॉर एग्जांपल डिलीट। ठीक है, और इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कलर की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, और कलर की प्रॉपर्टी क्या डेंजर अलाउड है या नहीं है। आई थिंक नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एरर है और इन्फो है, तो ये डेंजर के बजाय हम यूज़ करेंगे एरर, और इसको हम सेव कर लेते हैं और हम इसको टॉगल स्टार्ट नोट को यहाँ से हटा देते हैं। अब रियलिटी ये है कि ये डिलीट का बटन यहाँ पे मौजूद है और मुझे इसकी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन सिर्फ इस डिलीट के बटन को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि अगेन स्टिकी नोट का पार्ट है, मुझे स्टिकी नोट के अंदर डिलीट का फंक्शन चाहिए जो कि डिफाइन हमें करना पड़ेगा ऐप के अंदर, और ऐप से घूमता हुआ, नोट से घूमता हुआ वो स्टिकी नोट पे आएगा। तो मुझे पूरा प्रोसेस दोबारा करना है। सबसे पहले तो मैंने ये डिलीट नोट का फंक्शन बनाया, ठीक है, इसकी फंक्शनैलिटी पहले लिख लेते हैं, फिर इसकी सारी प्रॉप ड्रिलिंग हम करते हैं। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं सीधा सीधा इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे नोट्स डॉट फिल्टर करेंगे और हम ये करेंगे कि सिर्फ सीधा सीधा रिटर्न हम करेंगे अगर नोट डॉट आइटम की या नोट आइटम की आईडी नहीं मैच होती नोट आईडी से, तो बस हमें उसको फिल्टर करना है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो इससे हमारा जो आइटम है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस डिलीट नोट को हमें नोट्स में पास करना है, हम नहीं कर सकते। अगर हम डिलीट नोट लिखें यहाँ पे डिलीट नोट इक्वल्स टू डिलीट नोट, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं नोट्स के अंदर। तो पहले तो हमने ये कोड लिखा, उसके बाद जाके हम जाएंगे नोट्स में और पहले हम इसको अलाउ करेंगे कि ये ऐसा कुछ दे हमें। अब क्योंकि इसका और दूसरे फंक्शन का सिग्नेचर सेम है तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम डिलीट नोट कहेंगे। तो अब ये एक्सेप्ट कर सकता है डिलीट नोट अपनी ऐप TSX से। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये नहीं रो रहा। तो इस डिलीट नोट को ऐप से स्टिकी नोट में पास करने के लिए पहले मुझे ऐप से नोट में पास करना पड़ेगा, फिर मुझे नोट से पास करना पड़ेगा स्टिकी नोट पे। यहाँ जाके डिलीट नोट इक्वल्स डिलीट नोट, लेकिन मसला ये है कि स्टिकी नोट को तो पता ही नहीं है कि डिलीट नोट होता क्या है। तो अब क्या काम करेगा ये, और यहाँ से हमें डिलीट नोट भी चाहिए अपने प्रॉप्स में। यहाँ हमने सिर्फ टाइप डिफाइन किया है, यहाँ हम एक्चुअली उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को लेते हैं इस बॉडी के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे स्टिकी नोट पे और वहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे कि भाई यहाँ पे भी कोई डिलीट नोट आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया डिलीट नोट। अब हम डिलीट नोट के अंदर जो हमें यहाँ पे मिला है इसको हम यहाँ से गेट करते हैं और हम यहाँ पे कहेंगे डिलीट नोट,
और फाइनली हमें जो डिलीट नोट का फंक्शन यहाँ पे मिला है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने डिलीट के फंक्शन में। तो यहाँ पे जो ऑन क्लिक हमने लिया हुआ था, इसमें हम कहेंगे डिलीट नोट और यहाँ पे हम दे देंगे नोट डॉट आई डी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे टॉगल स्टार्ट नोट पे दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया डिलीट नोट किस टाइप का है, तो हमने यहाँ पे पास किया डिलीट नोट और इसकी प्रॉपर्टी ये है डिलीट नोट, इसको कहेंगे। मैंने कुछ टाइपो कर दिया था और इसको डिलीट नोट कहा जाएगा। अब आपने देखा कि इसको सिर्फ अगर कहीं पे मिस्टेक भी हो जाए तो मुझे 3-3 4-4 जगह जाके चेंज करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये मसले भी आते हैं प्रॉप डिलिंग के साथ। अब अगर मैं जाऊँ यूआई पे और मैं नोट 1 को डिलीट कर दूँ तो देखिए नोट 1 डिलीट हो गया। सिमिलरली नोट 4 को डिलीट करें तो नोट 4 डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास चूंकि वैल्यू पूरी पास हो रही है प्रॉपर्ली हर जगह से, तो ये काम कर रहा है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ऐप के अंदर हमारे पास फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं दोनों, वो दोनों जाते हैं नोट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ के तौर पे। यहाँ जा रहा है डिलीट नोट, टॉगल स्टार्ट नोट, और उसके बाद फिर ये स्टिकी नोट के अंदर जाते हैं डिलीट नोट, टॉगल स्टार्ट नोट। अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ये क्लाइंट ने एक नई रिक्वेस्ट भेजी है हमारे पास और उसमें क्लाइंट कह रहा है कि ये जो डिलीट वाली चीज़ है ना, ये रिमूव कर देते हैं, ये क्लाइंट फीचर नहीं चाह रहा हमसे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे जाना पड़ेगा मेरी सारी कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ से मुझे पहले करना पड़ेगा डिलीट, फिर मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फिर मुझे नोट्स पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से डिलीट करना 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 पड़ेगा, और ये कहानी पूरी चलती रहेगी जैसा कि आप होपफुली समझ चुके होंगे। और ये वो दर्द है जो मैं देख चुका हूँ बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर बेस्ड ऑन द सेम सिचुएशन, कि जिसमें प्रॉप ड्रिलिंग इस्तेमाल हो रही है। और जैसे अभी मैंने बताया, अभी तो ये बहुत ही मासूम सा हायरार्किकल कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बना लिया, जिसमें ऐप और स्टिकी नोट जिनको आपस में बात करनी है उनके दरमियान सिर्फ एक मासूम सा नोट्स कंपोनेंट है। लेकिन ऐसा भी होता है कि इन दोनों के दरमियान 6 डिफरेंट लेवल्स हों और सारे के सारे में प्रॉप्स पास होती हुई आ रही हो या प्रॉप ड्रिल होती हुई आ रही हो, तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड। तो अब जब हमने डिस्कस कर लिया कि ये सिचुएशन है कि जिसमें हम नॉर्मल प्रॉप ड्रिलिंग के अंदर स्टेट को, जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, उनको पास कर रहे होते हैं थ्रू आउट द कंपोनेंट। जैसे यहाँ से ये पास हो रहा है नोट्स और पिन नोट नोट्स में, और यहाँ से फिर नोट्स से पास हो रहा है ये स्टिकी नोट के अंदर, दोनों चीज़ें। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर नया कोई कंपोनेंट आता है, तो अभी हमने देखा कि अगर डिलीट नोट नया आएगा तो फिर हमें डिलीट नोट को दोबारा यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, उसको फिर हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, और ये कहलाती है प्रॉप ड्रिलिंग, जिसको आपने डिटेल के अंदर देख लिया यहाँ पे। अब इसके जो ब्लूपर अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हमने देखे वो क्या है कि ये हार्ड टू मेंटेन है। आई थिंक अब आपको पक्का यकीन हो गया होगा कि हार्ड टू मेंटेन है, और हर प्रॉप को आपने पास करना है सारे कंपोनेंट ट्री के अंदर। ये बहुत ही लेस स्केलेबल है और लेस रीयूजेबल है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई ब्लूपर कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आप अपने पूरे ऐप को या जो जो कंपोनेंट आपको काम में लेकर आने हैं उसको आप रैप कर देते हैं एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट को एक डब्बे की तरह कंसीडर करना है, जिसमें आपने वो सारे कंपोनेंट्स डाल देने हैं जो कि आपस में बात करेंगे थ्रू दैट कॉन्टेक्स्ट। अभी हमने जो सिचुएशन देखी उसमें क्या था? स्टेट डिफाइन हो रही है कहाँ? ऐप में। स्टिकी नोट वो जगह है जहाँ पे एक्शंस हैं। तो बेसिकली इसको बात करनी है और इसको बात करनी है आपस में, और ये बीच का जो कंपोनेंट है ना, इसको हमने इग्नोर कर देना है, तो इसको हमने इस्तेमाल ही नहीं करना। तो इसके लिए क्योंकि हमें ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट चाहिए और इनको आपस में बात करवानी है या इनको बेसिकली स्टेट शेयर करवानी है, तो इसलिए हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो रैप करेंगे वो ऐप से लेकर स्टिकी नोट तक के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐप लेवल पे क्रिएट करके इसको प्रोवाइड करोगे। तो पहला काम ये होता है कि हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा काम ये होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली इस पे। यानी कि यहाँ पे आपको ये सिचुएशन नजर आएगी कि जब भी एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो आपकी पूरी ऐप के सराउंडिंग है, इसमें जो सराउंडिंग बॉक्स है उसको हम प्रोवाइडर कहते हैं। यानी कि प्रोवाइडर एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपने सारे कंपोनेंट्स डाल दिए। अब अक्सर ऐसा होगा कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जैसे नोट्स, इसको इस प्रोवाइडर से कोई काम नहीं है, यानी कि इसको ना ही नोट्स
की अरे से कोई स्पेसिफिक काम है, क्योंकि ये इटसेल्फ नोट्स की अरे को रेंडर नहीं करता। हर नोट या हर स्टिकी नोट जो है वो बेसिकली हर नोट को रेंडर करता है। तो ये सिर्फ एक बीच का सॉर्ट ऑफ पासिंग एलिमेंट बना हुआ है, तो इसका वैसे कोई काम नहीं है। सिमिलरली जो स्टिकी नोट के अंदर एक्शंस हैं उसका नोट्स कंपोनेंट से कोई काम नहीं है। बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो स्टिकी नोट के अंदर क्लिक करेंगे, और जो फंक्शन ट्रिगर होगा वो ऐप के अंदर ट्रिगर होगा। तो इस वजह से अगर आप कॉन्टेक्स्ट पूरी ऐप पे दे देते हैं जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपकी कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ या सारे वेरिएबल्स जो आप शेयर करोगे वो सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल होंगे जो कॉन्टेक्स्ट का कंज्यूमर है। तो एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर होता है जिसको आपने पूरी ऐप पे डाल दिया, लेकिन पूरी ऐप में हर कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, सिर्फ वो कंपोनेंट्स कर रहे होंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर। और इसको अभी हम देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आप अगर अब चाहें तो आप अपनी ऐप के अंदर से इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमने क्रिएट किया है, आप इसके अंदर नोट्स भी डाल सकते हैं, स्टार नोट भी डाल सकते हैं और डिलीट नोट भी डाल सकते हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें अब हम ऐप से उठा के डाल देंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर जो स्टिकी नोट है वो डायरेक्टली जाके कॉन्टेक्ट कंज्यूमर के तौर पे ये पिन नोट और डिलीट नोट और नोट्स ये उठा के ले आएगा ऑटोमेटिकली। एंड दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, जो काम नोट्स का है फंक्शनैलिटी के अलावा वो सिर्फ ये है कि ये इन नोट्स कंपोनेंट को बेसिकली नोट्स की एरे को रिसीव करे और उसको पास कर दे स्टिकी नोट पे। ठीक है, तो नोट्स का काम, मैंने पहले कहा था कि इसका कॉन्टेक्स्ट से कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने गलत कहा। नोट्स का काम कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इस हद तक है कि वो नोट्स की एरे को रिसीव करे कॉन्टेक्स्ट से और उसको पास कर दे हर स्टिकी नोट पे। लेकिन इस नोट्स का इन फंक्शन से कोई काम नहीं है, पिन नोट और डिलीट नोट, इससे कोई काम नहीं है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये स्टिकी नोट और ऐप के दरमियान मौजूद हैं, और नोट्स का सिर्फ काम ये है कि वो नोट्स की एरे पिक कर ले। तो ये नोट्स भी एक कंज्यूमर बन गया, ये ऐप भी एक कंज्यूमर बन गया, क्योंकि ऐप बेसिकली इन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में भेजता है। तो स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि ऐप इन तीनों चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में भेज देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नोट्स का कंपोनेंट डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से नोट्स की एरे ले लेगा, और उसके बाद स्टिकी नोट जो है वो ये दोनों फंक्शंस उठा लेंगे कॉन्टेक्स्ट से डायरेक्टली। तो स्टिकी नोट को प्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम देखेंगे कि जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रॉप्स वगैरह सब सिरे से गायब हो जाएंगी। तो क्या इसकी प्रोसेस होता है? पहला प्रोसेस इसका ये होता है कि सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। आप रिएक्ट में से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हो और उसको एक नाम दे देते हो, उसको एक वेरिएबल पे असाइन कर देते हो। फिर आप अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रोवाइड करते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है ये हमारी ऐप को या हमारे उन सारे कंपोनेंट्स को रैप करता है जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल होगा। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो मेरी पूरी ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर जो जो आ रहा है उसको मैं डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर असाइन कर दूं। उसके बाद फिर हम ब्लूप्रिंट, उसके बाद फिर हम जो करते हैं वो हम देखेंगे इन जस्ट अ बिट। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का काम करते हैं कि हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम असाइन करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और हम ये करेंगे कि ये जो ऐप है इस लेवल पे यानी कि सोर्स के अंदर हम लिखेंगे ऐप context.ts। अब इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे जाके एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कॉन्स्ट या एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आप कहोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये रिएक्ट से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। और इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दोगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हम वो चीज़ें डालेंगे या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ें हम स्टोर कर रहे होंगे जो जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं, जिसमें नोट्स की एरे है, यहाँ पे इसकी टॉगल स्टार्ट नोट का फंक्शन है और डिलीट नोट का फंक्शन है। तो हम इसकी यहाँ पे टाइप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइप ऐप कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ आपको इसको टी ऐप कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो या आई ऐप कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो, या आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको इंटरफेस के तौर पे डिफाइन कर सकते हो। आई यूजुअली लाइक कि मैं इसको इंटरफेस के तौर पे डिफाइन करूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। इसमें सबसे पहले नोट्स की एरे होगी, तो नोट्स जो कि नोट की एक एरे है, और इस नोट को हम ज़रा इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे इस इंटरफेस को। सेकंड जो चीज़ हमने देखी थी वो क्या थी, और इसको हम क्विकली एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं नोट से। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइन कर देंगे कि ये चीज़ होगी, यानी कि हमारे पास टॉगल स्टार्ट नोट का एक फंक्शन होगा और डिलीट नोट का एक फंक्शन होगा।
फिर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि ये आई ऐप कॉन्टेक्स्ट, और ये आई का मतलब बेसिकली ये है कि हम इंटरफेस कह रहे हैं कि इंटरफेस ऑफ ऐप कॉन्टेक्स्ट। अब हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करें और हम कहेंगे कि नोट्स एम्प्टी अरे, हम यहाँ पे कहेंगे टॉगल स्टार्ट नोड जो कि एक एम्प्टी फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम एक और वैल्यू देंगे जो कि है डिलीट नोड, और इसको हम कहेंगे ये भी एक एम्प्टी फंक्शन है। ठीक है, ये एम्प्टी फंक्शन क्यों है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं ये एक प्लेस होल्डर वैल्यू है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होंगी हमारे केस के अंदर। अब जब हमने ये कॉन्टेक्स्ट बना लिया है ना, तो हम जाएंगे अपनी ऐप में, और अपनी ऐप के अंदर ये जो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिएक्ट फ्रैगमेंट इस्तेमाल किया हुआ है, इसकी जगह हम कहेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट ब्लूपर, और यहाँ पे हमने जो रिएक्ट का फ्रैगमेंट इस्तेमाल किया है इसकी जगह हम कहेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, और आप देख रहे हैं मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ डॉट प्रोवाइडर, और यहाँ पे हमने प्रोवाइडर इस्तेमाल किया, और इसको भी ज़रा फिक्स कर लेते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर आ गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर को एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स, यहाँ पे वो वैल्यू देना ज़रूरी है जो हम कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे हैं। तो अब अगर हम एक्सैली ड्रॉ पे जाएं, तो अब हम वो काम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ऐप है, ये ऐप इन तीन चीज़ों को नोट्स, पिन नोट और डिलीट नोट, इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर भेज दे। तो ये वाला काम हम अभी करने जा रहे हैं थ्रू ये वैल्यू के एट्रीब्यूट के। तो अब अगर हम अपने कोड पे जाएं, तो यहाँ वैल्यू के अंदर हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स डायरेक्टली बराबर है इस नोट्स अरे के। तो ये जो नोट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है यूज स्टेट के अंदर, इसको हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दूसरी चीज जो हम असाइन करेंगे वो क्या करेंगे, टॉगल स्टार्ट नोट, और तीसरी चीज जो हम असाइन करेंगे वो क्या होगी, डिलीट नोट। ये तीनों चीजें हमने प्रोवाइड कर दी हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे ऐप के अंदर जो नोट्स और पिन नोट और डिलीट नोट पड़े हुए हैं, इसको हमने कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया, जिसका मतलब ये है कि अब मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं इस पूरे डिलीट नोट को और टॉगल स्टार्ट नोट को और इवन नोट्स को यहां से रिमूव कर सकता हूं, यानी कि मुझे किसी भी प्रॉप की जरूरत ही नहीं है। और ये बेस्ट चीज है, हम इस पॉइंट पे सारी प्रॉप ड्रिलिंग को ही हम इस पॉइंट पे सारी प्रॉप ड्रिलिंग को सिरे से उखाड़ के फेंक रहे हैं, और हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे प्रॉप्स को एट ऑल। तो इस पॉइंट पे हमने कहा ये पूरा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर हमने नोट्स दे दिया, टॉगल स्टार्ट नोट और डिलीट नोट। अच्छा, इस चीज़ को हम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपको लिख के बता रहा था, लेकिन इसका मतलब यही है कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जो नोट्स की प्रॉपर्टी है उसको हमने बराबर कर दिया इसके, जो फंक्शन था उसको बराबर कर दिया इसके, और जो डिलीट नोट का फंक्शन था उसको बराबर कर दिया इसके। तो ये तीनों चीज़ें हमने पास कर दी हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को। अब चूंकि यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी आ चुकी है, तो अब मैं नोट्स में जाता हूँ, और नोट्स में क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं और ये फंक्शन भी प्रोवाइड करने हैं, और हमने ये नहीं किया हुआ, तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ लिख ली तो इसका मतलब है ये यहाँ से आएगा भी नहीं, तो हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसका मतलब है कि मुझे ये काम स्टिकी नोट पे भी करना पड़ेगा कि ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ दोनों को, और अब मुझे यही काम जो है वो वहाँ पे भी जाके करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ अपने स्टिकी नोट पे, मैं यहाँ पे तीनों को कमेंट आउट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नोट को हम रहने देंगे और डिलीट नोट और टॉगल स्टार्ट नोट इसको हटा देंगे। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर रहा हूँ, तो हमारे पास सिर्फ नोट आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। फिल वक्त मैं सिर्फ चीज़ों को इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एरर ना आ रहा हो और मैं कुछ रेंडर कर दिखाऊँ। तो स्टिकी नोट आइटम प्रॉप के अंदर फंक्शन नहीं आ रहे, नोट्स में ये हटा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये नोट्स की एरे ये भी जा चुकी है, यहाँ पे कोई प्रॉप नहीं आ रहा, और अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये नोट्स कहाँ से आएगा। तो अगर हम अपने एक्सैली ड्रॉ पे जाएं और आपको याद हो तो हमें ये करना है कि ये जो नोट्स है ये कंज्यूमर है, और इस कंज्यूमर के अंदर नोट्स चाहिए हमें। तो इस कंज्यूमर को यानी कि इस नोट्स को डायरेक्टली किसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट से ये नोट्स की एरे निकालनी है। तो ये काम हम कैसे करें, इसके लिए अगर हम अपनी स्लाइड्स देखें तो जो पुराना तरीका था वो ये था कि आप अपने कंपोनेंट के अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर लिख सकते हो और उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। लेकिन ये पुराना तरीका है और ये रिकमेंडेड नहीं है।
जो नया तरीका है वो ये है कि आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक इस्तेमाल करें, जिसमें आप अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें और इसमें से ऑटोमेटिकली आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने कोड में जाते हैं और यहाँ पे हम कहेंगे इस फंक्शन के अंदर, और मैं इसको एक्चुअली पूरा डिलीट ही कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले अब, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम डिलीट कर देंगे ब्लूपर, और इस ऑब्जेक्ट को भी हम डिलीट कर देंगे, और हम इन प्रॉप्स को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। वी डोंट नीड दिस एट द मोमेंट। अब हम ये करेंगे कि इस नोट्स कंपोनेंट के अंदर यहाँ हम ला सकते हैं इस नोट्स की अरे को, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो हम कॉन्टेक्स्ट के लिए लाएंगे वो अपना ऐप कॉन्टेक्स्ट लाएंगे। अब इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। ऐप के अंदर यही ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर इस्तेमाल हो रहा है, और ऐप कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ऐप कॉन्टेक्स्ट की फाइल से। ये ऐप कॉन्टेक्स्ट है जो हमने बनाया था, जो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनाया था, ठीक है। इसी ऐप कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे भी मंगवाया है ऐप कॉन्टेक्स्ट की फाइल से, और हमने यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है या वेरिएबल आया है यहाँ पे, इसको लेट्स से वैल्यू कहते हैं। अगर मैं इस वैल्यू पे माउस ओवर करूँ तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि ये आई ऐप कॉन्टेक्स्ट की टाइप की है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ जाके अगर लिखूँ वैल्यू डॉट नोट्स तो मेरे सारे मसले हल हो जाते हैं। मेरे पास नोट्स ऑटोमेटिकली रेंडर होना इस्तेमाल हो जाएंगे ब्लूपर, मेरे पास नोट्स ऑटोमेटिकली रेंडर होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको सेव करूं, अपनी ऐप TSX को सेव करूं और मैं ऐप पे जाऊं और रिफ्रेश करूं, तो मेरी ऐप ऑलरेडी काम कर रही है। अब ये काम कर कैसे रही है, अगर हम जाएं और कंपोनेंट्स में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे स्टिकी नोट को अगर हम कोलैप्स करें और स्टिकी नोट को कोलैप्स करें और यहाँ पे हम देखें तो ऐप के अंदर स्टेट मौजूद है, नोट्स की कोई प्रॉप नहीं है, लेकिन नोट्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर से वो नोट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो ऐप के अंदर डिफाइन हुई हुई है स्टेट, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू के अंदर नोट्स पड़ा हुआ है जो कि हमने प्रोवाइड किया ऐप के अंदर से। नोट्स का कंपोनेंट डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट को देख सकता है और उसके अंदर से ये नोट्स की एरे निकाल सकता है, और फिर हम स्टिकी नोट के अंदर हर नोट को जैसे पहले पास कर रहे थे वैसे ही पास करें। एक फ़र्क क्या आ गया कि हम यहाँ पे वो फंक्शंस पास नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमारा कोई फंक्शन भी काम नहीं करेगा। स्टार आप कर लो या डिलीट कर लो, इट डजंट रियली वर्क, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जब हमने ये काम कर लिया तो नोट्स TSX में इस सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं बची। मैं नोट्स की प्रॉप को हटा सकता हूँ, मैं इस पूरी टाइप को हटा सकता हूँ, मैं FC को हटा सकता हूँ, मैं स्टिकी नोट को हटा सकता हूँ, मैं अब जाके ब्लूपर मैं इस पूरी वैल्यू को यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से FC को हटा सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो अब अगर आप देखें गौर से तो मेरा कोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया क्योंकि मैं कोई प्रॉप्स ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। मेरे पास सीधा सीधा एक नोट्स का कंपोनेंट है जो कि कॉन्टेक्स्ट पे जाता है, कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू लेकर आता है और वैल्यू डॉट नोट्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता हूँ इस तरीके से नोट्स की तरह, ठीक है। तो मुझे वैल्यू डॉट डॉट नहीं करना पड़ेगा हर जगह पे। तो यहाँ से मैं नोट्स भी ला सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो डिलीट नोट भी ला सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो टॉगल स्टार्ट नोट भी ला सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसको क्लोज अदर करके अगर ऐप कॉन्टेक्स्ट खोलूँ साइड बाय साइड तो आपको नज़र आएगा कि जो जो ऐप कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है उसकी टाइप क्या है। नोट्स की एरे होनी चाहिए, टॉगल स्टार्ट का फंक्शन होना चाहिए और टॉगल स्टार का फंक्शन होना चाहिए, डिलीट नोट का फंक्शन होना चाहिए, और यही तीन चीज़ें मैं यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होगा ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट TS के अंदर। ऐप TSX के अंदर से हमने भेजा है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या सेव करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि यहाँ क्या क्या आ सकता है, उसकी टाइप क्या होगी। ऐप TSX से हमने असल में जो चीज़ें वहाँ जाएंगी वो भेजी हैं, यानी कि नोट्स के अंदर हमने ये नोट्स की पूरी अरे भेजी, हमने टॉगल स्टार्ट नोट के अंदर या टॉगल स्टार नोट के अंदर टॉगल स्टार नोट का फंक्शन भेजा, हमने डिलीट नोट के अंदर डिलीट नोट का फंक्शन भेजा। तो ऐप TSX से हमने चीज़ें भेजी, नोट्स TSX के अंदर से हमने वो चीज़ें रिसीव की, हमने कॉन्टेक्स्ट से वो चीज़ें निकाल ली, और मुझे यहाँ पे सिर्फ जो इस्तेमाल करना है मैं सिर्फ वो निकालूंगा, मुझे इन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ये मिडिल मैन था नोट्स कंपोनेंट, इसको कोई और काम नहीं था सिवाय नोट्स की एरे को पास करना। हर स्टिकी नोट पे या हर स्टिकी नोट के लिए बेसिकली इसको एरे चाहिए थी, तो सिर्फ ये वो काम कर रहा है।
अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टिकी नोट पे जाऊँ तो ये फंक्शन भी बहुत ही छोटा हो जाना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। और अब अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत रह गई है वो है डिलीट नोट का फंक्शन और टॉगल स्टार्ट नोट। तो हम यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे और उन वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं और हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जाम्पल के कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नोटेशन लेंगे इक्वल्स यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ जाके हम लेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट। ऐप कॉन्टेक्ट से मुझे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, यहाँ पे दो चीज़ें, डिलीट नोट और दूसरा टॉगल स्टार नोट। अब मैं जाके इस लाइन को अनकमेंट कर सकता हूँ और इस लाइन को भी अनकमेंट कर सकता हूँ। अब अगर हम सेव करें और जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट्स रिमूव करके रिफ्रेश करें तो स्टार की फंक्शनैलिटी काम कर रही है, डिलीट का फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है, ब्लूपर। तो यहाँ पे स्टार की फंक्शनैलिटी काम कर रही है, डिलीट की फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है, एवरीथिंग वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। और अब हमारा कोड बहुत क्लीनर है और कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं है। अब अगर आप ऐप के दरमियान में और स्टिकी नोट के दरमियान में 50 कंपोनेंट भी उठा के ले आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीच में कितने भी कंपोनेंट हो कोई प्रॉप ड्रिलिंग नहीं होगी। जिस कंपोनेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐप से, ऐप की स्टेट से, वो डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा होगा और उनको बेसिकली यूज़ कर रहा होगा। तो आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम जाएँ तो आप ब्रेक पॉइंट लगा के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल डिलीट नोट के केस के अंदर अगर मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि स्टिकी नोट में अगर हम यहाँ पे जाएँ और हम किसी को डिलीट करें जैसे नोट 3 को, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये नोट 3 की ये इसकी आईडी है। जैसे ही हम इस पे स्टेप इनटू करते हैं तो ये डायरेक्टली डिलीट नोट के फंक्शन में जाता है एप्टीएसएक्स में और यहाँ से ये पास कर सकता है। ऑल ऑफ दिस ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि हम ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में इन सारे फंक्शंस को भेजते हैं और स्टिकी नोट्स के अंदर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट से वो सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, ब्लूपर, और उसके क्या फ़ायदे हैं। और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि यही कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे आपको प्रोवाइड करना था कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है और कॉन्टेक्स्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरीके से बेहद दर्जे बेहतर है प्रॉप ड्रिलिंग के या स्टेट वेरिएबल्स को पास करना, चाहे हम फंक्शन पास कर रहे हो या हम स्टेट वेरिएबल्स या नॉर्मल वेरिएबल्स पास कर रहे हो। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। गिव मी 1 सेकेंड। एग्जैक्टली, ब्लूबर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कस्टम हुक्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं रिएक्ट के अंदर। तो हम अपना एक कस्टम हुक बनाएंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। एंड देयर वी गो, ऑसम। तो मेरा बोल बोल के जो है गला खुश्क हो चुका है, लेकिन आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। तो हम वापस लेकर आते हैं अपने बॉटम बैनर को और अपनी चैट को। तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे अभी तक, आई होप यू इन्जॉयड। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको रिएक्ट के कोर्स के अंदर देखोगे और साथ उसके टेक्स्ट देखोगे और स्लाइड्स देखोगे और रिकॉर्डिंग को बार बार चला के देखोगे तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू क्वाइट अ लॉट कंपेयर टू जो आपने अभी यहाँ पे देखा। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मुझे बताइएगा चैट के अंदर कि इफ़ यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि इस तरीके से मैं लाइव स्ट्रीम करते हुए ये लेक्चर्स बनाऊँ और लाइव स्ट्रीम के दौरान ही आप कुछ सीख रहे हो। इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट नॉट गुड, शुड आई डू इट इन आइसोलेशन। तो वट एवर यू हैव इन माइंड जस्ट लेट मी नो इन द चैट। और इसको हम यहीं तक रखेंगे और नाउ आई गो and maybe go to bed. So thank you so much whoever joined, and I'll see you the next time I see you. Thank you. Have fun. Happy coding.